हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, वड़कम, कैसे हैं आप लोग? फीलिंग गुड? आर यू गाइस एक्साइटेड? वेलकम टू द Wiltambik Top Gun Awards 2022. I am your host Amrit Kashyap and I am here on behalf of the pharma division of Alembic Pharmaceuticals Limited, and I welcome you all once again. Please give a huge round of applause for all of you guys present over here. I'd like to extend my gratitude, greetings to everyone. जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पे Zoom में connected हैं, 306 participants हैं. I assume और भी बहुत लोग आएंगे all over India. I wish you all a great evening, not just for you guys, but all the Top Guns जो यहाँ मौजूद हैं मेरे साथ यहाँ पे. Please, Top Guns के लिए ताली हो जानी चाहिए. I hope you guys have a wonderful evening. We have a very, very interesting lineup जो कि आपको मजा आने वाला है. And you go back home with prizes, goodies, and of course with a big smile, right? तो ताली हो जानी चाहिए आप सबके लिए. अब जैसे कि मैं ये देख रहा हूं, मुझे बताया गया है कि यहाँ पे सबके सब महारथी हैं, टॉप गन्स, टॉप अचीवर्स. सब एक टॉम क्रूज नहीं है, 15 टॉम क्रूज यहाँ पे मौजूद है, राइट? तो अब हीरोज की बात कर रहे हैं तो बॉलीवुड में आपको पता होगा कि किंग खान कौन है. बॉलीवुड में एक ही है. कौन है? कौन है? कौन है? एग्जैक्टली, शाहरुख खान है. तो उनका एक मैसेज है आप लोग के लिए जो वो बोलना चाहते हैं आपको कि हे टॉप गन्स, टॉप गन्स, 15 टॉप गन्स है हमारे पास, और अगर ये टॉप गन्स अपनी जिंदगी की सबसे 3 घंटा मस्ती कर लिए तो ये खुदा भी तुमसे नहीं छीन सकता. हे आई एम द किंग. ताली होनी चाहिए. तो अब जब आप सब ने शाहरुख खान का मैसेज सुन ही लिया है तो फिल्मों की बात कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रहा है, तो विद्या बालन जी ने कुछ कहा था कि पिक्चर सिर्फ 3 चीजों से चलती है: एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट. एग्जैक्टली. तो उसके बिना तो हम जा नहीं सकते. तो सबसे पहले इवेंट स्टार्ट करने से पहले हम एक शपथ लेंगे, ओथ लेंगे. तो आप सब अपने हाथ सामने ले आइए, सब लोग. और जो मैं बोलूंगा आपको ये बोलना है कि मैं अमृत शपथ लेता हूं या लेती हूं कि आज मैं जो भी कहूंगा या कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी. आप लोग भी. तो बस अब जब शपथ हम सब ने ले ही लिया है तो फिर सच बोलिएगा. हाउस द जोश? हाउस द जोश? हाउस द जोश? Are you guys Top Guns? Are you guys Top Guns? क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया. So let's go. ला 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 ला. मेरी उम्र के नौजवानों, Everyone, come on. दिल न लगाना ओ दीवानो. ये मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना ओ दीवानो. मैंने प्यार करके चैन खोया, नींद खोई. अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई. हे प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रोग कोई. चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल से जोर कोई. चलता नहीं है दिल दे के यारो इस दिल से जोर कोई. इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई. तो गाओ ओ शांति, शांति, शांति. ओम शांति, ओम शांति, शांति. We have started this event. We are pumped up. Are you guys pumped up? Top Guns, Tom Cruises, are you guys ready? Should we begin? Okay,
तो जैसा कि आप सबको मैं बता दूं कि स्टीव जॉब्स, द लेजेंडरी फाउंडर, उन्होंने कहा था कि स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। सो आई गेस जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सब लोग हंग्री हैं, फुलिश थे, एंड दैट्स व्हाई these guys are here, because they worked hard to achieve this big dream to be successful, because that's what Alembic stands for. Stay with Alembic and grow with Alembic. Exactly. So now let me tell you guys, why are we here? ये टॉप गन्स की इतनी बातें क्यों हो रही है? So we are here to recognize the top guns, the top achievers, and I am pleased to inform you that यहाँ पे विल्डेम्बिक के टॉप गन 15 अचीवर्स प्रेजेंट हैं, जिन्होंने फाड़ू परफॉर्मेंसेस दिए हैं लास्ट एक साल में। ताली जानी चाहिए उन लोग के लिए। यही नहीं, 400 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के फाइट करके, कंपीट करके उन्होंने अपना दम सबको दिखाया है ऑल ओवर इंडिया में, एंड दैट्स व्हाई दे आर द एलीट ऑफ द एलीट, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड दैट्स व्हाई यू गाइस आर हियर। सो फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू गाइस। अपने लिए ताली मार लीजिए। These guys, the top guns, showed commitment, consistency, perseverance, and I'm sure a lot of crying. But all those hard work have finally paid off, and that's why you guys are here. You guys are Wiltambic top guns. और अब टॉप गन्स की बात कर ही रहे हैं, तो हमारे साथ मुझे बताया गया है अभी अभी कि एक टॉप गन कनेक्टेड है, राइट सर? राइट। सो मुझे बताया गया है कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेडिकल डिपार्टमेंट के डॉक्टर खान के हमारे साथ जूम में प्रेजेंट हैं, हमारे द लेजेंडरी टॉप गन। प्लीज वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस। उनका एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज है आप सबके लिए। हेलो सर, हाउ आर यू? होप यू आर ग्रेट। I am absolutely fine and thank you so much for having me in this program. जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, this is a very good theme and this is happening with one of the very old and established divisions of our company, which is pharma. I mean, for those people, I'm seeing a lot of new faces here also, which is really good. So the energy, I can really feel the energy. The dance and everything has shown that there is a lot of energy in the field. And this energy, I think, is really so positive that it will definitely take us to the next levels. I've been in Alembic for the last 12 years. I've seen the different divisions grow and perform. And this has been really a good change that I'm seeing, especially in pharma. I see some senior leaders here. My salute to them for taking the legacy of Alembic forward. At the same time, it's very nice to have a completely recharged, rejuvenated young team, which is able to take up the challenges of tomorrow and able to help us succeed in today's world also. Now, everybody knows the kind of products which we had in pharma. They were mostly into the acute therapies. And there has been a little bit of shift, if I can say so. I wouldn't say a shift, but at the same time, equal emphasis on products which are also in the chronic segment. I have also, for those people, those of my friends here who attended the meetings some time back, I think if I can say it was somewhere in April or March, where I was given the opportunity to address the pharma teams. I had categorically sort of stated that today the border between acute and chronic therapies, or I would say the border between an acute division and chronic division is sort of getting merged. Because today what we are really looking forward is not a basket which is exclusively acute or a basket which is exclusively chronic. What we are looking at is very able teams who will able to help in getting traction for a group of products which make unmet medical need to our prescribers. And what we start off from, if I can say, the logic is not acute or chronic products. It is our prescribers. Whatever our prescribers are, we will make sure that whatever is the need of those prescribers, whatever the pathology of patients they look at,
and what are those pathologies those patients experiences. I think if they are probably best taken care of in the domain of our prescribers, whether they are acute products, whether they are chronic products, whether they are some other kind of products, I think that would be really, really rewarding for all of us. And fortunately, here I have seen the success which we have taken initially of entering into a space where pharma was not present. But I think at the same time, though, there were a lot of external challenges, and external challenges will be there with so many companies, so many products, and so much of marketing pressures. I think what I would say, looking at this team here, I'm seeing a very young team, a very dynamic team, a very enthusiastic team, and a very focused team. And I thank them and also applaud the leaders, especially in marketing as well as sales and everybody, for guiding them properly. So the internal problems which we had challenges, I think those are getting overcome in a very nice way. We have teams which are able to take up new challenges and not in a particular set mindset of whether the product is acute or chronic. Like I explained to you, it's all about the prescriber and how to increase the prescriber base and try to satisfy the prescriber's need for the patients that he's seeing. And now dwelling directly into the diabetic segment, all of us know diabetes is so prevalent in India. Almost every person, whether he is a GP, whether he is a CP, is writing diabetes anti-diabetic product. They are seeing these patients day in, day out. And if I can go a little bit back, if I can trace a little bit history to maybe 15 years back, the number of products were so less. The products, and these products were traditionally sold only by, sorry, I don't know what's happening here. Okay. These products were traditionally sold only by diabetic companies. Today that has changed. These products, older products, were products which had a lot of side effects. There were challenges in selling those products because of conditions of hypoglycemia. And there was a lot of challenges of how these products would be prescribed. So only an expert would probably go and do this kind of diabetic therapy. Towards today, because the products which were initially very safe and very progressive, which were marketed by the multinationals, are today out here with all of us can be available in a generic form. So it is going to be really a good move for the people of this country to get these products as fast as possible, and which can be given at a very, 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 what I can say, very, very affordable prices. So this is a benefit for everybody, and I think we should not lose out on these opportunities. Having said that, the story and the product pipeline for us doesn't stop with Vildambic. It doesn't stop with Vildagliptin or Metformin. It doesn't stop with Vildagliptin plain. It moves on. Make sure that you are equipped with these lot of exciting things that are there in the future for you people. And I think you have proven yourself that you can do this job exceedingly well. You have shown the success in not only in terms of the doctor engagement, but also in terms of the commercials, which we are seeing and tracking at the head office every day. So it's been a wonderful journey up till now, and I really wish you all the best for a still better journey with more products. And I wish you all the best. So thank you for giving me the time to address all of you. And I hope you will have a wonderful evening. And thank you so much. Thank you so much, sir, for joining in and for your wonderful message. The one thing that I got to know, that one thing that separates the successful brands with the non-successful brands is just pure perseverance. You just keep going at it until you win. Thank you so much, sir, for joining in. And now I'm told that we have Dr. Rajesh Singh, Associate Vice President, also here with us via Zoom. So please, can we talk to him? Hello, sir. How are you? I'm fine. Thank you. Thank you so much for joining in. Sure. I'm sure you are loving the success of the brand, and the Top Guns are here listening to you. Do you have any message for them? Good evening, Top Guns.
Yeah. So I mean, I mean, we met 3 months back to during the new financial year, beginning of the new financial year. We discussed that time that we are seeing a lot of potential in this molecule, and pharma team is the most able team who can actually deliver on this future potential. And now just 3 months later, we are meeting again. And I hope we keep on meeting every 3 months or every 6 months to success more and more milestones for Wildambic M. It has created one case study for Alembic that I mean such tight execution can be done in field. It is I mean absolutely fantastic and a great job done by pharma team. Overall, I mean now let me give you a little bit I'm sure that you are in a mood to celebrate, and I mean you have achieved so much now. So I don't want to take too much of your time, but let's look at little bit some details of the market. What you'll understand is vildagliptin plus metformin. In last 2 years, it has become the third most prescribed molecule by a general practitioner, or in fact in the whole market. In consulting physician, diabeto, endo, everybody, especially general physician, MBBS. So third most prescribed. So look at the speed and the gallop that this market is taking. So why not? I mean, we are the team who can actually capitalize on this opportunity, and rightly so. You have already demonstrated in 3 months that we can do this. We are already on that track, and I hope we will actually accelerate even going further from here. Vildagliptin plus metformin, 900 crores market, third largest molecule in diabetes. So such a big opportunity has been given to you, and rightly to a team which was actually waiting for an opportunity to show what they can do. So you have got this opportunity, make best of it, and wish you all the best. Thank you so much, sir. Thank you so much. I'm sure these are top guns. They already know how to succeed. Yeah, absolutely. They've shown what Yes, they are made of. So to sum up, I think what we believe is stay with Alembic and grow with Alembic. Thank you so much for joining in, sir. Thank you. Thank you. And now, guys, let me tell you what is Top Gun. Wildambic was launched on 15 September 2021, and since its inception, it has achieved many milestones, and it continues with a journey towards becoming #1 at GP. This was only possible because of the efforts received from the sales team. To represent the team, we have the best of the best, the elite, the Wildambic Top Guns here with us. They are the stars of the division, and they're the stars of the region who have their sheer efforts to make sure that this company goes to the top. And now, all the Top Guns, आपने इतना जो hard work किया है, उसकी झलक देख लेते हैं. We have a visual representation of what actually Top Gun means. So can we have the video? Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
You are the top 1% all naval aviators. The elite. Best of the best. Woo! Yes. The journey has just started. The Top Guns, the Mavericks, they nailed each and every objective that was given to them. And finally, these guys are the Top Guns of the group. ताली हो जानी चाहिए उन सब के लिए। और क्योंकि ये जो मिशन था, इसको पॉसिबल करने के पीछे बहुत लोगों का हाथ है, right? So guys, let me introduce you, let me welcome you with the one and only Mr. Charlie Bhav sir, Assistant General Manager, along with Sanjay sir, Associate Vice President, to address the audience. ताली हो जानी चाहिए उन सब के लिए। Charlie sir and Sanjay sir on the stage. So, the stage is yours, guys. Please. Thank you again. Good evening, everyone. Namaskar, pranam, sat sri akal to everyone who is there watching from their homes. As you would have seen just now, what was the last message? Journey had just started, right? So I would like to tell you that these 15 people are not those who are really Top Gun, right? This is one of the aspect, right? They are the people who actually made our launch successful. When today I say that Bildambik launch is successful, and if I have to look back, who are the people really supported us, right? To make this real success today. And when we talk about success, it is not about that we have reached to the destination. वो मंगल ग्रह चला था ना, तो ये शुरुआत में जो लॉन्च होना था उसमें जो टीम थी, उसमें आप 15 लोग टॉप गन हो। मंगल पे पहुंचना अभी बाकी है। Getting my point on, right? So successful launch happens when there are people who gives their 24 hours every day, fully concentrated towards one ambition, that whatever task given to me, that I will do 100%. And if I have to name those people from my division, these are the 15 people sitting here. Clap for them. These are, you guys are here with your efforts. There are many people who have put efforts but could not make to this event. But their contribution is never less. There are many people in the field. I would like to thank everyone who contributed towards success of Bildambik. Bildambik is not because of Charlie, Sanjay, Deepak, and these 15 people. They are important. They have met the best. But there are people who are sitting at their territory, in their territories, and looking forward that next time they will make to this event. So congratulations to each one of you there in the field who made this event, who made this launch of Bildambik successful. Woo! तालियां हो जाए सर के लिए।
I would also like to thank each and every family members of my team colleagues. The reason behind that, I have seen people starting right in the morning, 7 o'clock, taking all the inputs, planning their bag, going to field and reaching late. Whenever family was asking you, why this much of late, yeah? Every day you had been coming by 6 o'clock, now you are coming 8 o'clock. What is the reason? I got the feedback that when you were saying to your family that abhi Wildambic ka launch khatam nahi hua, abhi aur bhi der ho sakta hai, and they cooperated. So thank you everybody there in the families. Keep supporting our people. But सवाल ये उठता है कि थोड़ा जर्नी मेरे से भी समझो तुम लोग. You try to understand, right? How did it started? It started with some vision. And when it was decided that pharma has to do something, this division has not been launching many products for last many years. And there was to be a decision taken. I will ask somebody and he will come here and tell you how it was decided, how difficult it was, but what kind of confidence the management had in each one of you who are there in pharma division today. I'll ask some question with Charlie and Charlie will explain, then you will understand. Charlie, tell me, when it was told that Charlie, in pharma division, you have to launch a diabetic product now. So what was your feeling? Sir, I would be very frank to say, and to the team also, I don't know how it will sound to you, but it's an insider story I'll share. Or I would say, good that this wasn't the case with Wildambic. We started from the go, right? This didn't happen. Okay, so that's just, I would say what I felt actually. We as Team Pharma, like we know each other and we know from a good amount of time now each other. Then this decision comes in, and I know the DNA, right? That what we as a team are, right? We are Roxid, we are Charcoferol, right? We are, a bit of cloth also, Vitaresp also, and suddenly anti-diabetic. Oh my God! So that was something that came to my mind. And I wasn't only thinking about you, I was thinking about myself also, right? That how are we going to make it more effective? Or how are we going to make it work? But there is a flip side to us also, if you look at. And that flip side to us is that Alembic Aaj, if you look at the brands that it carries as the legacy, who made it? अरे हमने बनाया है, अपने डिवीजन ने बनाया है. Alembic Pharma is where it all started. The foundation of every big brand that the company has been laid in this very division, and the people in this division have worked for those to become the identity or make the identity of the company in the market, right? And so the flip side gave me the kind of confidence that I thought, yes, we can do it. If anyone can do it, it's we who can do it. It's this team who can do it. And Charlie told me, sir, एक चीज भरोसा रखो, चाहे वो एक्यूट का प्रोडक्ट हो, एंटी डायबिटिक लेके आओ, न्यूरोसाइकेट्री का लेके आओ, फार्मा डिवीजन को एक ब्रांड दे दो लॉन्च करने के लिए, सक्सेसफुल होगा, इसका गारंटी मैं देता हूं. तो चार्ली ने बोला, सर वो सब तो ठीक है, हो तो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे चैलेंज लग रहे हैं. तो बोले, चार्ली वो क्या है, क्या लग रहा है तुम्हें कि चैलेंज रहेगा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में फार्मा डिवीजन को? क्योंकि मैं भी नया था ना, आई वॉज ऑल्सो देयर फॉर 6-7 months, तो मुझे भी थोड़ा ज्यादा आइडिया नहीं था. आई वॉज नॉट नोइंग व्हाट ऑल कैन बी चैलेंजेस. तो आई आस्क्ड हिम कि व्हाट डू यू फील कैन बी द मेजर चैलेंज इन मेकिंग दिस Wildambic सक्सेस? तो क्या था चार्ली, तुमने क्या बोला था? 2-3 चीजें बताओ मुझे. सर, आई रिमेंबर द फर्स्ट थिंग इटसेल्फ वाज, पहला तो सिंपल थिंग कि हम क्रॉनिक प्रोडक्ट समझ पाएंगे, पहला चीज तो, राइट? एंड दैट टू एस्टैब्लिशिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, building a chronic product from scratch, doctor by doctor, discussion by discussion in clinic, we going and talking inside anti-diabetics
right? Insulins and how, where the therapy is, where we are in the, place in therapy. तो सबसे पहला तो मुझे ये आंसर खुद को करना था कि कैसे करेंगे हम. That was the first thing. दूसरा, availability, because a chronic product का availability has to start, मतलब होता है ना एक viral infection जैसा from day one, for a response to every patient who's searching that product anywhere. क्योंकि बाद में तो घर के पास ही लेंगे ना, हर महीने डॉक्टर के आसपास से नहीं लेंगे, right? So that was the second thing, availability, right? And third was ये सबका जो निचोड़ निकल के आता है, billing. What will be the first billing out of all this? So these were the three things that were. So I told Charlie with all confidence in you, Charlie, ये availability, billing, ये सब मेरे मत्थे छोड़ दो. Leave it to me. You take care of the understanding of the brand part. And I want to thank today to entire team, medical training, and all of you who are sitting there in your territories, the kind of effort that you put in understanding the therapy and brand, it was tremendous. We did not expect that you guys will have this much of knowledge after 6 months about the product. And I have been working in field. I have seen my small territory representative also talking to doctor, ki doctor, why you are prescribing Glimipride now? Why not Myveldambic? And that question itself gives me that confidence ki we have really done something for the market, right? Actually, the first score that came in after your first training, जो test हुआ ना, Mindtical, Alembic Vidya पे, first score that came in, I rechecked it. ये सही score है ना अपनी team का, right? Because it was new therapy, right? It isn't easy to get, drenched into it so easily in initial days, but कर दिखाया आप लोग ने from day one. That gave us confidence. Yeah. And the second part, which confidence I given to him, my marketing team, don't worry about availability. My team is there, don't worry. These 18 people are from those group only where I had a confidence, right? And you made it finally, right? And you know what happened? He was talking about availability. Sir, अगर 1000-2000 में भी available हो गया ना पहले महीने में, तो अपना brand चल निकलेगा. Guys, you make 6,000 retailer availability in 1 month. 6,000 retailers, 1200 prescribers, 1,200 prescribers we converted in first month itself in chronic product. It was not an easier task without you. You have really made this brand successful as of now. And once again, I say it is a successful launch. Today, we are not sitting here for the final success. We are sitting here to celebrate the final successful launch of the brand. We have just started, right? And now we have to start our journey from here and go to the next level. I would request, please give a big round of applause for everybody who is there in their territory and for yourself. Thank you very much for making Pharma division proud. Every moment, every hour, every second, every minute that you have worked in your territory for Bildambic is really commendable. And I see that one of the person was talking, one of you, that sir, what is your, Shruti asked you, what is your aspirations? He said, कि जब तक 100 bucks से नहीं बेच लूंगा मेरा सपना पूरा नहीं होता है. Who was the guy there? Can you stand up? Yeah. Congratulations. I want everyone sitting in their territory to see to his voice, his dream, and everyone there should look forward to see that 100 bucks से बिकते एक महीने में कैसे. Thank you very much. Please sit. So dear friend, to tell you, starting from, I'll say, ideation to making things operational and to bring the entire process to this level, it was not possible because without one leader who has been always with us, our executive vice president, Mr. Amit Bedi. I'd request him, sir, please come and tell few words to our team. Amit sir के लिए ताली बजनी चाहिए, Top Girls. Big round of applause, please. Amit sir on stage, everyone.
Big round of applause for Huge our round of sir. applause for Amit sir. The man behind everything. Thank you very much, sir, for all the support that you have given to us so far. Without your leadership, without your guidance, without everyday support that you have provided for us, and most importantly, the confidence that you instilled in every mind of pharma division, it would not have been possible. This successful launch was not possible. Please give some of your good words to everyone at the same time, what you really expect from us as a pharma division going forward. Thank you, sir. Thank you. A big thanks to Charlie and a big thanks to Sanjay for, and of course, Dr. Khandke and Dr. Rajesh who are not here with us today. A big thanks to all of them for getting the evening started off and for all the words and that very, very lovely presentation which we've seen. A big thanks to all of you. Before we go forward, or hum sab yahan, I think the theme of today's evening is Top Gun. Is that correct? So pehla cheez to ye bataiye, how many of you have seen the film Top Gun? 2, 3, 4. So I see a lot of people have not really gone back and seen the film, right? Okay. So what we'll do is, let me try, and for those who've not seen the film, for those who have, I'm sure you've really enjoyed it. For those who've not, it's a film. It's a film which was first made many, many years ago, and it kind of the second part of the film was released more recently. It's been amongst a very, very successful film. It's around fighter planes, fighter jets, and of course, a lot of masala which is built in. But the reason why I'm picking up Top Gun, and that's the reason why I asked you all this question, saying how many of you watched the film Top Gun, is because between the launch and the reason why all of us are here today and the film itself, I see a lot of parallels, a lot of commonalities. बहुत ज़्यादा similarities है उसमें. So let me try and figure out and try and explain to you what is it that I see in common between the film and the reason why we are here today. The first and foremost piece which I see common is about what we call reinventing ourselves. Okay. So what about the film? If for all those who've seen the film and for all those who haven't, what is it about reinventing yourself that the film spoke about? Since a lot of you have not seen it, let me just kind of speak about it. The first film was released when I think I was just about coming out of school and into college. So that's how long back it was, because obviously you see me with gray hair here, so you can figure out that I passed out of college and school a long time ago, right? In terms of time, it was 36 years ago. The first film was released 36 years ago. And of course, we've had the second film released more recently. I think it is to the credit of the people who've actually gone back and scripted the film in terms of what they've been able to do to make the film such a big success. What is the parallel which I see here? And I think Sanjay spoke about that. The fact that we've not. Yeah, you want to continue? Achha, okay. So the fact that for the division which we are speaking about in pharma itself, in some ways, our launch has been about reinventing ourselves too. Reinventing the fact that the division has not had a launch for a very long time. I think Charlie and Sanjay spoke about that. The fact that we've gone back and reinvented another brand, which we're not speaking about so much today, but all of you are aware of the relaunch of VitaRest, which is something which we've done more recently. So in some ways or the other, whether it's the launch of a new brand, whether it's the relaunch of VitaRest, I think the division is also in the process of going back and relaunching and reinventing itself in one way or the other. That's the first message, and that's the first piece which I see in common from the film and here. The second piece is about what we call coming in from behind. What is it about coming in from behind? For once again, if some of you have seen the film, you've seen about how the odds are stacked up against the lead actors in the film itself. But of course, they go back and meet the target, so on and so forth. How is it relevant to pharma? One of the pieces which we've not spoken about, Charlie and Sanjay didn't speak about it. Some of you might know it, some of you might not know it. It wasn't there in the presentation. But we were the 93rd brand. We were the 93rd brand to go to market with the launch. The molecule after it, the molecule and the first set of generic products were launched, I think, in the last
quarter of 2020. And we came in, as you all of you know, 2019, in fact, not even 2020, sorry, in the last quarter of 2019, early part of 2020. And we came in as late as all of you know, only in the last quarter of 2021. So in a market, and all of you are aware of it, in a very, very competitive market like pharmaceuticals, coming in about 1 year later, coming in as a 93rd brand, and yet going back and figuring out, and we'll speak about those numbers, figuring out the kind of success which we've created, is about coming in from behind and going forward. So very well done, all of you. I think you should celebrate that and congratulate that. And I think that's the second message I want to leave with you, besides reinventing, besides about coming in from behind. The third piece, and once again, the film speaks about that in one ways, but let's quickly come in and look at what have we been able to go back and do. As far as the film is concerned, once again, if some of you follow the film, in terms of the release from its production house, uska jo production house ka naam hai, it's called Paramount Films. It is the best ever selling film for them in their entire history. That's how well that film has done. But coming to us, what is the kind of success which we've seen so far? Some of the numbers you've gone back and seen. After coming in as a 93rd brand, today in terms of prescribers, given the fact that a large number of prescribers are those which we don't cover, especially in the specialty chronic space, we are in the top 10 out of those 93 companies when we launched, and now there must be some, I don't know, 200, 300 companies who are there in the market. We are in the top 10 as far as the total number of prescribers is concerned. Very well done. When you look at it from revenue also, we are in the top 20 as far as revenue is concerned. And we spoke about that number. We spoke about the fact that we are number 17 as far as revenue is concerned at this point in time, once again after coming in so late in the day. So I think that's another form of success which all of us have been able to go back and collectively, we've been able to collectively earn that. So I think that's another fantastic job which is done. From an external reflection point of view, I think we're coming very, very close to being about a 1 crore brand. Obviously, what we like to do is to become more than about 1 crore internally also, and that will be some of our other objectives which we'll go back and set for ourselves. So I think what I wanted to speak about is some of the commonalities which I've seen between the brand and the film which we're speaking about. Top Gun we're speaking about, but there are some learnings from the film and also what each one of you has been able to do. I think it's also important for us to just sit back for about 30 seconds and figure out, and I think Charlie spoke about that once again in the presentation along with Sanjay, what really made us succeed. Us samay mein, when we went back and launched in the last quarter of 21, what did we really have? As a brand, as a therapy, that is not something which pharma has done. I think the first thing which we all did was to have this self-confidence. And I think half the battle is always in the mind. Hum sabko malum hai. If you win the battle in your mind, going back and winning the battle in the marketplace is an easier thing to do. It is first to be able to go back and convince yourself. And I think all of you, whether it's all my colleagues from the pharma division who are not here, and of course, all the top guns who are here, I think what you managed to do was to go back and win the battle in your mind, saying, I can go back and I can succeed. And I think that's one important piece. The second is all the elements of planning which we've been able to do behind the brand, whether it's around the name itself, whether it's the creative, the kind of training which we've done, the kind of go-to-market plans which we've been able to create by all our colleagues who are here and who are not present here also. Some of our colleagues who played a very important role in the brand are not even present in this room. So a big thanks to all the people who've really been able to go back and put this together as a second part. And the third part, I think, is very, very important, which is about very, very good execution, which is what all of us have collectively been able to do. What I like to do is to stop here and ask each one of us to stand up and pat ourselves and give a clap for ourselves for what we've been able to go back and achieve. Very well done, team. The Top Guns. And this is for everyone here, and this is for everyone not here in the room, but out there across the length and breadth of the company. Very, very well done, gentlemen. Thank you. Please. Let's always remember one of the most difficult things to do, 6 months later, 7 months later, it looks very simple in hindsight. But sabse mushkil kaam jo hai is to go back and launch a new brand.
And I think the example which I speak about very often when we have a smaller discussions is launching a brand is like giving birth. Almost 6 to 7 months is a fantastic job. But I think we have enough and more room ahead of us. Let's remember that we are still a very, very young brand. It is not even a year old at this point in time. We cannot take our eyes off any new brand, whether it is Wildambic, whether it's a relaunch. I'm not talking about our entire portfolio, because otherwise I will say, no, but we have to pay attention to everything. Of course we have to. But we have to pay special attention to every new child in the room, because the new child requires a little more support than maybe an existing brand will, because an existing brand has already found its place in the market. So whether it's about Wildambic, whether it's about the relaunch which we've done now with VitaRest, I'm sure we'll have a lot of new launches which are going to come ahead of us at this point in time. Continue to give it the kind of love, the kind of devotion, the kind of attention, the kind of focus which each one of you has been able to do. A big thanks to all my colleagues at head office, from marketing and sales, across the length and breadth of the company, and all our special top guns here. Very well done, and congratulations once again. Thank you so much, sir. Thank you so much. सर ने एकदम सही कहा. इनफैक्ट जो हमारी त्रिमूर्ति हैं, संजय सर, चार्ली सर और अमित सर, तीनों ने सही कहा कि we are just getting started, and here we are today celebrating the successful launch of the product. और यहाँ से आप सबकी जर्नी शुरू होने वाली है टॉप गन्स. सो आप सबके लिए फिर से ताली हो जानी चाहिए. A leader is someone who knows the way, goes the way, and shows the way. आप जो टॉप गन्स यहाँ पे हैं, पूरे कंट्री से आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, राइट? आर यू गाइस प्राउड ऑफ योरसेल्फ? आई कांट हियर यू. यस, यू आर गाइस आर प्राउड. सो देखिए, इंडिया जो है ना, बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है, बहुत सारी रिलीजन्स है, कल्चर्स है, कास्ट है, राइट? और आप सब मिलके पूरा इंडिया बनाते हैं. तो जितने भी लोग यहाँ पे जूम से कनेक्टेड हैं, मैं समझता हूं कि वो आप सबसे मिलना चाहेंगे कि कौन है ये टॉप गन्स, हाँ, जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं. तो आई थिंक आप सबको थोड़ा स्टेज पे बुलाया जाए. सो प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज, all top guns, please come on stage, guys. Let's meet you guys. Please come on stage. सारे top guns आ जाओ स्टेज पे. हमारे टॉम क्रूज, 15 टॉम क्रूज है हमारे पास. The top guns, please. All the people who are connected via Zoom, देख लीजिए, ये हमारे टॉप गन्स हैं. All over the country, हर एक कोने से आए हैं. North, South, East, West. They have been performing really, really well. Please, please, please आ जाइए. Okay. आप सबको congratulations. आपने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. आपकी टीम लीडर्स भी यहाँ पे हैं, एंड जितने भी लोग जूम में हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप सबको भी congratulations, बिकॉज ये सब तो यहाँ पे हैं, लेकिन इनके पीछे जो मेहनत लगी है इनकी टीममेट्स की, और जितने लोग जो मुंबई नहीं आ पाए, कहीं ना कहीं ये लोग सब उनमें से आगे निकल गए, बिकॉज इनमें वो जज्बा था, परसिवरेंस थी एंड इंटेंसिटी थी कि ये टॉप गन्स बनेंगे, राइट? सो अब कुछ आप लोग खाना पीना कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, राइट? तो आप लोग का चेहरा भी सब देख चुके हैं. अब मुझे आप बताइए, सिंपल सा एक छोटा सा, आप सब जानते नहीं है एक दूसरे को, राइट? यू गाइस डोंट नो ईच अदर एट ऑल. तो थोड़ा एक बॉन्डिंग एक्टिविटी करेंगे आप सबके साथ, ठीक है? सो बचपन में बहुत छोटा था, जब मैं नन्ना मुन्ना बच्चा था, आप भी थे, तो हम सबको बताया गया था कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, आपको पता है? इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26. पक्का? 26 पक्का? ये लीजिए, ये लीजिए, 26 होते हैं ना? ठीक है, आप भी ये माइक ले लीजिए. ओके. सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या होते हैं, क्या क्या अल्फाबेट्स है. स्टार्ट. ABCDEF. हाँ, ओके, ठीक है. पर मुझे ये बताया गया है, मैं तो
मतलब पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नहीं हूँ, बहुत बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ABCD तो पता नहीं, लेकिन AGOG लोजी कुछ मुझे ऐसा पता है, कुछ है। तो कुछ हो जाए इन सब के लिए बॉन्डिंग एक्टिविटी। तो ये आपके लिए है। द स्टेज इज योर्स गाइस। मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। AGOG लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। तालियां बजाओ हमारे टॉप गर्ल्स के लिए। Guys, pump them up. चलो अब आपसे कुछ बातें करते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं। एंड सर आप कहाँ से हैं? कैन वी हैव द माइक प्लीज? यस सर, व्हाट्स योर नेम एंड आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? E-Road, एंड योर रीजन? Chennai, चेन्नई। एंड सर? Bhubaneswar, भुवनेश्वर। Bhubaneswar, Cuttack area. ओके, Bhubaneswar, भुवनेश्वर। Mahbubnagar, Hyderabad region. headquarter Ernakulam region. Siddharthnagar, headquarter, Siddharthnagar region, Lucknow. फैंटास्टिक। UP, Azamgarh. अरे यूपी से हैं आप भी? Region, Guwahati, headquarter, North Lakhimpur. ओके सर आप? Dhule, Maharashtra. महाराष्ट्र से हैं? अरे Bihar, Katiyar. अरे क्या बात है, Jaunpur, UP. यूपी से आप? Sir, Mathura, Ghaziabad. गाजियाबाद। सर आप? Patiala, Chandigarh. पर सर आप? Hisar, Haryana. ओके सो जैसे कि सब देख रहे हैं ये सारे इंडिया से हैं, हर तरफ हर कोने से हैं, लेकिन इन लोग जो इतने जो हार्डवर्क कर रहे थे इतने महीनों से, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, लेकिन क्योंकि विल्डाम्बिक वी बिलीव इन डाइवर्सिटी एंड यूनिटी एंड दैट्स व्हाई दीस गाइज आर हियर टुगेदर। इन सब के लिए, टॉप गर्ल्स के लिए ताली बजानी चाहिए दोस्तों, अपने लिए भी ताली मार दो। और जितने भी लोग जूम में हैं, दिस इज फॉर यू गाइज, ऑल द हार्ड वर्क। सो अब जब आप लोग पम्प्ड अप हो चुके हैं, ठीक है, तो सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज अपनी सीट ले लीजिए एंड विल बिगिन विद द प्रोसीडिंग्स। हमारे टॉप गर्ल्स के लिए ताली बजाना चाहिए फिर से। सो गाइस, अब आपको लग रहा होगा कि बहुत बातें हो गई, स्पीचेस हो गए, तो कुछ तो अब शुरू करना है, राइट? इवेंट करते। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? वी आर हियर द टॉप गन्स अवार्ड, राइट? सो अब जाविंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेट्स गेट बैक टू द अवार्ड सेरेमनी, राइट? लेट्स गेट स्ट्रेट टू इट। Now let me call upon on stage once again Mr. Amit Bedi sir, cluster head, Sanjay sir, divisional head, and Charlie sir, assistant general manager on the dais. Let's start with the proceedings. Can I have the mic please? हमारे तीनों लीडर्स के लिए ताली चाहिए, टॉप गर्ल्स। Tell me the name once. Name? Okay.
So all the people who are connected via Zoom, thank you so much. I hope you guys are enjoying. And let me call upon on stage now our National Sales Manager, Mr. Manivanan sir, and Amit sir on stage as well, to give away the awards to our top guns who have outgunned each and every one in the country. And that's why these guys are here today with us. ताली बजानी चाहिए अमित सर के लिए, मणिवरन सर के लिए, संजय सर के लिए, and अमित सर के लिए. And now, to start with, we have with us our 21 achievers who are above 25K PCPM connected with us on the Zoom call. Let us have a huge round of applause as I call out their name, guys. Please, सारे top guns, ये आपके colleagues हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा perform किया. They are connected with us here via Zoom call. These are the 25K PCPM achievers who made Willdambic successful in the past 1 year. Okay, I think we are having some network issue. Let me tell you guys, these are the top 25K PCPM achievers, starting from Surinder Kumar Mehra from Hamirpur headquarters. उनके ताली हो जानी चाहिए. Vijay Kumar Das, Jajpur, Lakshmi Narsimhan Motipalli, Iluru, Hingmire Basaveshwar, Barshi, V. Gauri Shankar, Tirunelveli, Desai Ajit Anand, Bijapur 1, Jinabed Altaf Hussain K, Bijapur 2, Sumit Kumar Tiwari, Jamshedpur 1, Subankar Saha, Agartala, Chaitanya Vanahali, Belgaum 1, Sachin Jain, Sagar 1, Rohit Sharma, Faridabad, Alok Kumar Pradhan, Jaipur, Siragonda R. Patel, Ichal Karanji, Ramandeep Singh, Bhatinda, Manohar Yadav, Gazipur, Sandeep Kumar, Karnal, Sunil Shamrao, Shekhar, Sangli 1, Ranjit Ramdas Patil, Sangli 2, Nilesh Gangaram Chormale, Satara 1, Sunil Uttam Chavan, Mumbai, Washi. इन सब के लिए एक फिर से जोरदार ताली हो जाए. ये जो हमारे परफॉर्मर्स थे जो कि मुंबई नहीं आ पाए, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि तब जाके ये टॉप गन्स यहाँ पे आए हैं. उन सब के लिए तालियां. एंड नाउ बिफोर वी बिगिन सर, ये जो स्टार ऑफ द रीजन है क्या होता है, ये इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, लेट अस नो. द स्टार ऑफ द रीजन इज चोजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1, highest PCPM for Willdambic YTD March 2022 in the region. Second is the PCPM YTD March 2022 should be greater than rupees 15,000. And third is Q3 and Q4 Willdambic M incentive earner. Now, on the basis of these three criteria, we have with us the star of the regions. Huge round of applause के लिए. सबसे पहले start करते हैं हमारे फर्स्ट इस इवेंट नाइट के फर्स्ट टॉप गन. तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके लिए हमारे पास बहुत ही ज्यादा कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, प्राइजेस हैं, एंड मुझे ये बताया गया है कि कोई एक टॉप 15 में से कोई एक है जिसको मिलेगी बाइक. तो उनके लिए ताली हो जानी चाहिए. तो ये एक सस्पेंस जो है मुझे भी नहीं पता है. देखिए, मुझे पता होना चाहिए था लेकिन मुझे भी नहीं पता है. बट इनफैक्ट बाकी आपको मोबाइल्स मिले या बाइक मिले ये तो अब वक्त ही बताएगा. तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉप गन अचीवर से. सबसे पहले द वन एंड ओनली वी हैव मिस्टर जयंत सखिया, राइट. हेडक्वार्टर्स नॉर्थ लखीमपुर आसाम से हैं. इनका एक्सपीरियंस विद ओलंपिक है 8 साल का एंड एस्पिरेशन है टू बी ए सक्सेसफुल एम्प्लॉय. नाउ जो रीजन ऑफ सक्सेस है विल्डैम्बिक में, right selection process for Willdambic, and before launch we made available that all the important chemists and timely follow-up. Number 3, all the inputs are given on time and followed, all tagging doctors regularly. Mr. Jayant PCPM objective था वो था ₹70,000 और इनकी हॉबीज हैं listening music, traveling, and key milestones in life है successful and respected person for society, जो कि ये करते आ रहे हैं. इनकी हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ थी व्हेन इनका पहला सैलरी क्रेडिट होता है इनके अकाउंट में. एंड बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज ऑफ कोर्स इनकी माँ एंड इनकी स्पाउस. झूठ तो नहीं बोला ना?
और अब इनके फेवरेट सॉन्ग्स मुझे बताए गए हैं, आसामी सॉन्ग्स हैं। मनुए मनोहर बेब, सही बोला मैंने? बाय आसाम रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की है। सो प्लीज जयंत को स्टेज में बुलाया जाए। दिस इज योर मोमेंट गाइस, आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द इवेंट, मिस्टर जयंत सखिया फ्रॉम नॉर्थ लखीमपुर, आसाम क्वार्टर्स। All the 14 Top Guns, जयंत के लिए ताली हो जानी चाहिए। He is part of you guys. इन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया सबको, and he is our first Top Gun for the award night. And now इनका वो वक्त आ चुका है जिसके लिए वो इतनी दूर से आए हमारे लिए। तो प्लीज जो हमारे अमित सर हैं, मैं उनको बोलूंगा सबसे पहले, प्लीज इनको, दिस इज हिज टाइम, प्लीज felicitate and reward him with all the hard work that he has done for all the past 1 year. And of course, this beautiful Mr. Jayant, तेरी ताली हो जानी चाहिए। He is the star performer. He is the star of the company of and Amit sir, please, this is for him. ये जीतते हैं And now I would request Mr. Jayant, because वो हमारे सेलिब्रिटी है, स्टार है, सब लोग जूम में देख लीजिए, जयंत सिग्नेचर दे रहे हैं अपना हमारे विल्डाम्बिक टॉप गन के रजिस्टर में, हमारे पहले टॉप गन। उनकी फैमिली कितनी खुश लग रही होगी आज, उनकी हार्ड वर्क, क्योंकि उनकी सपोर्टर है। She must be really, really proud, right? सेकेंड टॉप गन अचीवर ऑफ द डे इज, उनका नाम है मिस्टर हमद अख्तर फ्रॉम धुलिया हेडक्वार्टर्स। मिस्टर हमद अख्तर के बारे में मैं बताऊं तो वो एक्सपीरियंस ओलंपिक्स उनका 3 साल का है, एंड ही एस्पायर्स टू गेन ऑल द न्यू स्किल सेट्स टू बी एप्लीकेबल फॉर फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज। एंड द रीजन फॉर सक्सेस जो हमारे सेकेंड टॉप गन है, ये था कि वो रेगुलर फॉलोअप पे बिलीव करते थे, वीकली कॉल्स एंड डेली रिमाइंडर्स रखते थे। ही हैज बीन परसिस्टेंट एंड उनका पीसीपीएम ऑब्जेक्टिव था ₹30,000। हॉबीज ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग, सो वो यहाँ पे आ चुके हैं तो उनको तो मजा ही आ रहा होगा। एंड की माइलस्टोन्स इन लाइफ सर आपको बता दूं, ये था कि टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बाय वर्किंग फुल टाइम, तो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं वो डेफिनेटली। उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ था व्हेन ही वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। ओह कांग्रेचुलेशंस गाइस। उनके बिगेस्ट इंस्पिरेशन नन अदर देन हिज फादर, जो कि साथ में है या शायद यहाँ पे हमारे साथ हैं, एंड उनके फेवरेट सॉन्ग्स हैं अरे अरे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो हमद अख्तर के लिए ताली हो जानी चाहिए, हमारे सेकंड टॉप गन ऑफ द इवेंट। He has outperformed each and everyone in the country, and here he is. अच्छा, जिसमें टी-शर्ट उसमें ये भी पूछा आपका फेवरेट सॉन्ग। और भी मुझे ताली हो जाए उनके लिए। Vietnam Top Gun 7 champion of the event. और समझ गए। माइक
रुकिए, आपको मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ एकदम चुपचाप थे आप, आ नहीं रहे हैं सामने, लेकिन देखिए इतना जो हार्डवर्क आपने किया है, फाइनली आप यहाँ आ चुके हैं, राइट? आपके लीडर्स आपके साथ हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, दे नो द नेम, दे नो यू बाय फेस नाउ। तो अब इन्होंने कहा था कि इनकी जो इंस्पिरेशन है वो है इनके पापा, और आपका फेवरेट सॉन्ग भी आपने बता दिया, तो गा देते हैं। तो विल्डाम्बिक बेचने से ज्यादा हार्ड है। देखिए देखिए यू कैन, मैं आपको साथ देता हूँ। देखिए मेरी मम्मी बोलती है कि मैं बहुत ही अच्छा बाथरूम सिंगर हूँ, तो आप भी हो सकते हैं मेरे साथ। तो पापा कहते हैं, गाते हैं, 1-2 लाइन गा दीजिए पापा के लिए। चलिए पापा के लिए याद करिए, पापा के लिए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है यहाँ। विल्डाम्बिक के पास है आपकी मंजिल। नाम हो गया फाइनली, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। और क्योंकि आप हमारे सेलिब्रिटी हैं, टॉप गन, सेकंड टॉप गन, तो आपके लिए हमारा टॉप गन रजिस्टर है। प्लीज गिव योर सिग्नेचर व्हिच विल बी एम्बेडेड फॉर ऑल द लाइफ टाइम। और अब मोहम्मद के लिए फिर से ताली हो जाए दोस्तों, यार आपके कलीग हैं। और अब कंटिन्यू करते हैं। हमारे थर्ड टॉप गन जो है उनका नाम है मिस्टर गौरव कुमार, जो कि हमारे हेडक्वार्टर पटियाला से है। एक्सपीरियंस विद ओलंपिक उनका 3.2 इयर्स का रहा है, एंड वो एस्पायर करते हैं टू वर्क रियली हार्ड टू बिकम द बेस्ट व्हाट आई कैन बी इन ओलंपिक। रीजंस फॉर सक्सेस उनका ये था, ही वाज फोकस्ड, ही वाज प्लान्ड एंड हैड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। उनका पीसीपीएम ऑब्जेक्टिव था ₹65,000। उनके की माइलस्टोन्स थे मंथ ऑन मंथ ग्रोथ इन ओवरऑल सेकेंडरी सेल्स एंड टू बी नंबर 1 इन द विल्डाम्बिक एम इन रीजन। उनके हॉबीज हैं ऑफ कोर्स रीडिंग, लर्निंग, लिसनिंग म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट। Happiest moment in life, when he purchased his own house with his own hard-earned money. ताली हो जानी चाहिए उनके लिए। And उनके biggest inspiration है उनके पापा। And last but not the least, उनका favorite song है, अरे मिस्टर रोमांटिक निकले ये तो, तुम ही हो फ्रॉम आशिकी 2। तो प्लीज गौरव कुमार आ जाइए स्टेज पे, हमारे तीसरे टॉप गन। Top of the event. गौरव कुमार की ताली बजती रहनी चाहिए दोस्तों। देखिए रुकिए, कहीं मत जाइए, रुकिए। मुझे ऐसा बताया गया है कि आपकी जो फैमिली कहाँ से है? पटियाला से। और मुझे माइक मिलेगा प्लीज। मिस्टर गौरव, मुझे ये बताया गया है कि आपकी जो फैमिली है पटियाला से है। जी सर। एंड वो अभी कनेक्टेड है हमारे साथ जूम में। जी सर बिल्कुल। ये आपकी फैमिली है? जी सर। ताली हो जाएगी फैमिली के लिए। कौन कौन है बताइए जरा। सर ये मेरी सिस्टर है सर, ये पापा बैठे हैं, पापा सिस्टर, मम्मी, पापा, नमस्ते आप सबको। देखिए आपका बेटा क्या खेल कर रहा है पूरे इंडिया में, टॉप गन हो चुका है। एंड आपने कहा था कि बिगेस्ट इंस्पिरेशन पापा है, तो थोड़ा बताइए क्या इंस्पायर किया है, कैसे बचपन से आपको पाला है एंड यहाँ तक आप पहुंचे? सर मतलब मेरे पापा ने ना, मैं बता नहीं सकता क्या 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 किया है सर। एक्चुअली एक टाइम सर ऐसा भी था, पापा का ट्रीटमेंट चलता था, एक्चुअली उनको सार्कोडोसिस की प्रॉब्लम है, तो हम पीजीआई सर चंडीगढ़ हॉस्पिटल है, हम ट्रीटमेंट के लिए गए थे। हमारे पास सर टेस्ट जो करवाने थे उस टाइम पे, मतलब मेरे पापा ने मेरे को उस टाइम ये लाइन बोली, कहते यार ये टेस्ट नहीं करवाने, मेरे को ना जाते हुए नदी में फेंक दियो। तो सर मतलब इतना मेरे को उस टाइम वो लगा कि यार मैं, मतलब उस टाइम मैं कुछ कर ही नहीं सकता था उनके लिए। बट आज मैं उनको कहना चाहता हूँ कि पापा, एक सर पंजाबी में सॉन्ग है कि दुनिया दी केड़ी शह चाहिदी, 10 बापू पुत तेरा हुण इन्ने जोगा हो गया है। थैंक यू। चक दे फटे
चक दे फटे। थैंक यू सो मच, मजा आ गया आपसे बात करके। एंड ऑफ कोर्स देखिए, आप कहीं मत जाइए, आपकी फैमिली है तो इनसे थोड़ा बात करते हैं। आपने बता दिया कि पापा आपको कितना इंस्पायर करते हैं, तो थोड़ा इनकी फैमिली से बात करते हैं। हेलो, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नमस्ते बहन जी। नहीं आप तो आप बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपका बेटा यहाँ तक पहुंच चुका है, 3rd टॉप गन है। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। और कितना आप इंस्पायर करते हैं आप इसको। आप इसने बताया कि आपकी जर्नी यार आपके लिए भी घर ले चुका है ये, तो आपको तो बहुत प्राउड फील हो रहा होगा, क्यों? और आंटी जी आप बताइए कैसा लग रहा है, आपका बेटा आप छोटे से पाले थे, आप यहाँ तक पहुंच चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और अब तो मुझे लग रहा है रक्षाबंधन आ रहा है, बहन देखो भाई से बहुत बड़ी चीज लेनी होगी आपको। ऑलरेडी बहुत सारी लिस्ट बनाई हुई है। बस लिस्ट रेडी है, तो देखो पता है कि अब क्या करना है आपको, ठीक है। 3rd टॉप गन है, इनके लिए ताली हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच, आपकी फैमिली का सपोर्ट था, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गौरव, हमारे 3rd टॉप गन। विश यू द बेस्ट, आप लोग अपना ख्याल रखिए। एंड अब आगे बढ़ते हैं। वो है, उनका नाम है मिस्टर परवीन, जो कि हिस्सर हेडक्वार्टर है उनका। 5 साल से ओलंपिक के साथ में है और वो एस्पायर करते हैं टू बी एरिया मैनेजर। उनके रीजन फॉर सक्सेस ये था, प्रॉपर RCPA, राइट कस्टमर सिलेक्शन एंड फॉलो बैक आफ्टर इनपुट इन्वेस्टमेंट। और उनका PCPM ऑब्जेक्टिव था ₹75,000। वाओ। और उनके हॉबीज है लिसनिंग पंजाबी म्यूजिक और फार्मिंग। अरे ये तो पूरे हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़े हुए लगते हैं मुझे। की माइलस्टोन था इनके लाइफ में GPAT, GPAT, राइट, 2017 एंड AAA अचीवर इन 2019। ताली हो जानी चाहिए इनके लिए। ही इज एन अचीवर। उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ था मैरिज। वाह, हैप्पीएस्ट मोमेंट। पता चलेगा नए नए शादी लग रहा हुआ है, इसीलिए। बिगेस्ट इंस्पिरेशन उनके हैं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसवाला। ओके, भगवान उनकी रूह को शांति दे, लेकिन सिद्धू मूसवाला बहुत ही बड़े लेजेंड थे और आपकी फेवरेट थे, तो ऑफ कोर्स आपको। और अब आगे बढ़ते हैं। उनका फेवरेट सॉन्ग है दिलबरा मूवी, पति पत्नी, और वो अरे रोमांटिक, इसलिए खुश लग रहे थे। आइए आइए परवीन, आइए, टॉप गन, हमारे 4th टॉप गन ऑफ द इवेंट। आइए स्टेज पे। इनके लिए क्या पता इनको बाइक मिलेगी या मोबाइल, मुझे नहीं पता, लेकिन परवीन हमारे 4th टॉप गन। परवीन के लिए ताली बजनी चाहिए जो दोस्तों, टॉप गन्स। देखिए आपको मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे बस एक ही प्रॉब्लम है, सबको होगा, जितने भी लड़के हैं आप मैरिड हो चुके हैं। ये आपने लिखा कि शादी हो गई सबसे अच्छा दिन था, ऐसा क्या? जो आपको पसंद उससे शादी हो जाएगी। अरे मिस्टर रोमांटिक निकले आप तो। हाँ, तो कुछ एक रोमांटिक गाना हो जाए। गाना और नाचना मेरे को आता ही नहीं है। क्या पसंद है आपको? सुनना मेरे को बहुत अच्छा। सुनना पसंद है आपको। चलिए कोई बात नहीं, इनको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। ये पहले यहाँ पे है जो इनको शादी हुई है तो बहुत खुश लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ साल बाद पता चलेगा आपको, बट ठीक है। थैंक यू सो मच, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। आपको सिग्नेचर जरूर होना चाहिए। हमारे 4th टॉप गन ऑफ द इवेंट है, ये लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं द 5th टॉप गन, जिनका नाम है महेश कुमार, जो कि हेडक्वार्टर्स आए हैं उडुपी से। एक्सपीरियंस विद ओलंपिक, 14 साल से काम कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस काफी लंबा रहा है और एस्पायर करते हैं टू स्टे विद ओलंपिक एंड ऑफ कोर्स ग्रो विद ओलंपिक। द रीजंस फॉर सक्सेस उनका ये रहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल इन माय HQ, सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर एंड द प्राइस एंड प्रमोशनल इनपुट एडवांटेजेस। और इनका PCPM ऑब्जेक्टिव था ₹50,000। इनके हॉबीज भी वही सेम है, लिसनिंग म्यूजिक एंड वॉचिंग क्रिकेट। की माइलस्टोन्स इन लाइफ रहे हैं द क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंट विद फैमिली एंड ओलंपिक। जिस तरह से ये ओलंपिक से प्यार इतना कर रहे हैं, मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है कि ये सबसे ज्यादा कमिटेड टॉप गन रहे हैं। हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ है, नो पर्टिकुलर रीजन बट देयर कैन बी मेनी, आई थिंक। उनका लगता है, पूछते हैं आपसे इनके बिगेस्ट इंस्पिरेशन
if it's an Alembic, I'm inspired by my first AM, Mr. Harish. तो उनके लिए ताली हो जानी चाहिए पहले हरीश सर के लिए. And of course, his favorite songs are all old hit songs, Hindi या Kannada. So please, huge round of applause. Welcome our fifth Top Gun, Mr. Mahesh Kumar. Everybody on stage. Mahesh, our fifth Top Gun of the night, please. Mr. Mahesh, ये लीजिए. You told me, यहाँ पे लिखा है कि आपके जो एम थे उन्होंने आपको इंस्पायर किया था और 14 साल से सर आपके साथ में हैं. एंड इनके आंसर से मुझे लग रहा था कि ये ओलंपिक के लिए 15th ईयर चल रहा है. ताली होनी चाहिए इनके लिए. And he is so committed to Alembic as a person, as a candidate of this company, and he's been really doing hard work. तो बताइए कि आपके जो एम थे आपको कैसे इंस्पायर किया, क्यों इतने इमोशनल है आप उनके लिए? To be frank with you, sir, I had a little stammering problem. Okay. If you would have rejected the first day, I would have not carried this long, 15 years. Okay. Okay. All right. 3-4 months also, I have put this our products because for a marketing person, we should have a Right. speaking skill. Yeah. So that time, first 3-4 months, I was struggling. Later, he only has inspired. He has given me the little bit. He was associated with me 5 years, and all with my seniors. Then they helped me also. Exactly. Yeah. ऐसा कहते हैं ना कि लाइफ में जिंदगी में आपको 100 लोग नहीं चाहिए, सिर्फ एक चाहिए जो आप पे बिलीव करेगा. एंड आई थिंक उन्होंने आप पे बिलीव किया, तब जाके आप 15 साल पे यहाँ पे पहुंच चुके हैं. इनकी ताली होनी चाहिए दोस्तों. और क्योंकि आप हमारे सेलिब्रिटी हैं तो आपका मौका आ चुका है. जाइए रजिस्टर पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए, क्या पता फ्यूचर में काम आएगा. हाँ, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. विश यू लक. थैंक यू सो मच. एंड नाउ गाइस, वक्त आ चुका है हमारे 6th टॉप गन. उनका नाम है मिस्टर कवीन कुमार पी, जो कि हेडक्वार्टर्स ईरोड से हैं. एक्सपीरियंस विद ओलंपिक इनका भी 14 साल का है. He aspires to being a continuous performing candidate for the company. And reasons for success is proper RCPA, doctor contact, and regular follow-up. The PCP objective इनका ये था कि 40,000 का था. इनके हॉबीज है watching TV, and key milestone in life है to be a good human being. इनके happiest moment in life था his wedding and his child's birth. ताली होनी चाहिए इनके लिए. His biggest inspiration is Karunanidhi, and his favorite songs are all A.R. Rahman songs. So please, Kavin Kumar को स्टेज पे बुलाया जाए. Our 6th Top Gun of the award night, our special Top Gun, Mr. Kavin Kumar P, all the way from Erode, as you can see, and ताली बजनी चाहिए all the Top Guns. आपकी कलीग है ये, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने. वेट अरे कहाँ जा रहे हैं? वेट, कम है. आई हैव टू टॉक टू यू. आपने ये बताया, मुझे यहाँ पे लिखा है कि करुणानिधि है जो यू आर हिज इंस्पिरेशन, राइट? सो शेयर अस योर एक्सपीरियंस, व्हाई योर इंस्पिरेशन एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू. Actually, Mr. Karunanidhi is our ex-prime chief minister of our state. Yeah. He's a hard worker, actually. It's early morning every day. Wake up time is 3 o'clock. So only 4 hours he sleep. Lot of developments they done in our state.
Yes, all of you very well. Tamil Nadu is most developing state across in India. Yes. So he's good poet and good story writer also. So I belongs to that party. There's DMK, Dravida Munnetra Kalagam. So I like Karunanidhi. My Fantastic. inspiration is. Fantastic. And sir, let me tell you, he has also been with Alembic for the past 14 years, I think going to 15th year, right? So इनके लिए भी ताली होनी चाहिए, please. Huge round of applause for our 6th Top Gun. Please give your signature and the stage is all yours. Our celebrity, huh? Take care. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, we have a seventh Top Gun of the event, Mr. Rabindra Kumar, जिनका headquarter कटिहार है, experience with Alembic 5 साल का है, and he aspires to be a good contributor to his team. His reasons for success in Wildambic is brand reminder input distributions on right doctors, meet 2 or 3 times in a month, and morning reminders. और इनका PCPM objective था 30 to 35,000 per month. His hobbies include traveling with his childhood friends and key milestones in life to achieve higher position in Alembic, which he will. The happiest moment in his life is when he got his first bike. Yes, हम सबको वो याद है. And his biggest inspiration is, of course, our very own Dr. PJ Abdul Kalam. His favorite songs include Khairyat from Chichore, I Was in Chichore, which is a great film, national award film, and इनके लिए ताली होनी चाहिए. Mr. Rabindra Kumar, our 7th Top Gun of the event, guys. From Katihar, 5 साल का इनका experience है, और 7th Top Gun. Yeah, sorry. Okay. Okay. So now, Rabindra sir, first of all, congratulations on this. You have worked really hard, sir. Amit sir, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि Rabindra inspires to be in a very top position in the company. Now that you have seen him grow in the company, what do you think? Will his dreams come true? I see no reason why not. In fact, I think one of the pieces which we spoke about at Alembic is, if you look at almost every single leader who's there in Alembic, they've all been with Alembic for a very long time, and they've all kind of grown within the organization itself. So I see no reason why it can't happen. Definitely, he's really ambitious, and he wants to be on the top. And अब मुझे ये बताया गया है कि इनकी family हमारे साथ connected है Zoom में. जितने भी लोग देख रहे हैं Top Guns, मिलते हैं इनकी family से, इनकी wife और आपकी mother, दोनों आपकी inspiration है, supporters है. कैसा लग रहा है यहाँ पे इनको देख के? बहुत अच्छा लग रहा है. आप लोग, आंटी जी आप बताइए कैसा लग रहा है? आपका बेटा यहाँ तक पहुंच चुका है. अच्छा लग रहा है. अच्छा तो सबको लग रहा है, हमें भी लग रहा है. और बताइए कुछ, आप कितने दिन से देखे नहीं है इनको? अच्छा अच्छा कंफ्यूज तो हम हो गए. अच्छा इनकी वाइफ के लिए थोड़ा कुछ सवाल है मेरे पास. ये इनका फेवरेट जो सॉन्ग है खैरियत फ्रॉम छिछोरे है, और ये बहुत रोमांटिक है क्या? ऐसा कुछ है क्या? गाना वाना घर पे गाते हैं आपके लिए? बहुत ऐसी गाना गाते गाते टॉप गन बन चुके हैं शायद ये. इनके राय यही है, गाना गाते गाते रोमांस मूव में आके टॉप गन बन गया. थैंक यू सो मच. आप सबको नमस्ते. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. ये है हमारे टॉप गन, एंड यस विश यू द बेस्ट गाइस. थैंक यू सो मच. गाना गाएंगे? यस यस यस, क्यों नहीं गाएंगे? उनको देख के गाइए, उनके लिए. है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे, है तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे आके, है
मेरी जान चली जाए के जो मुड़ के देखे है तुझी से कटके ये गिरे तेरी छत पे अरे, आके it's so है, मैं romantic. मांझा तेरा तेज गिरे तेरी छत पे आके है। थैंक यू लॉट। थैंक यू सो मच। इनका पतंग जो है वो उनके घर पे आके रुक गया था, इसलिए थैंक यू सो मच। अपना सिग्नेचर दे दीजिए हमारी सेलिब्रिटी। एंड नाउ यस, एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे 8th टॉप गन है। इसके बाद हम छोटा सा ब्रेक लेंगे आप लोग के लिए। तो आपको बता दूं कि हमारे जो 8 टॉप गन है उनका नाम है मिस्टर विकास चौधरी, जिनका हेडक्वार्टर है सिद्धार्थ नगर। एक्सपीरियंस विद ओलंपिक है 10 साल का, एंड ही एस्पायर्स टू ग्रो विद ओलंपिक। रीजंस फॉर सक्सेस: डॉक्टर सिलेक्शन, पीओबी एंड अवेलेबिलिटी, डॉक्टर कन्वर्जन एंड फॉलो अप। और इनका पीसीपीएम ऑब्जेक्टिव था 35,000। इनके हॉबीज हैं फुटबॉल खेलना, एंड की माइलस्टोन्स इन लाइफ है टू बिकम अ सक्सेसफुल कैंडिडेट। एंड उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ था फर्स्ट टाइम AAA पार्टिसिपेशन। ताली होनी चाहिए इनके लिए। मिस्टर रमानाथ पांडे, एरिया मैनेजर, और उनका फेवरेट सॉन्ग है तुम अगर साथ देने का वादा करो हम यहाँ पे सारे रोमांटिक गाते हैं। क्या बात है, ओलंपिक वाले आप लोग को चलिए टॉप गन चूज करना है तो दे हैव टू बी रोमांटिक, तब जाके टॉप गन करेंगे ये लोग। मिस्टर विकास चौधरी आर 8 टॉप गन ऑफ द इवेंट गाइस। आपको ऐसे जाने देंगे नहीं। ये लीजिए सर, जैसे कि उन्होंने बताया कि इनकी जो फैमिली है इनकी इंस्पिरेशन है, एंड वो सब हमारे साथ ज्वाइन है यहाँ पे। नमस्ते आप सबको। थोड़ा बताइए कौन कौन है हमारे साथ। पापा है, मम्मी है, छोटा वाला भाई। पापा मम्मी छोटे भाई को नमस्ते। देखिए यहाँ तक लड़का पहुंच चुका है, इतने सारे मेहनत करके इतने साल से। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आंटी जी थोड़ा बताइए कि इनके कुछ शरारती कुछ ऐसे कुछ कैसे आपको यहाँ तक पहुंच गया आपका बेटा? मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, हर चीज में आगे है, खेलने में भी आगे है, कूदने में आगे है। आपकी कंपनी आगे बढ़े, मेरा बच्चा मेहनत करे खूब अच्छी ढंग से। यस, मेरी तमन्ना है, मेरी कामना है। बस और क्या चाहिए, यही तो खूब आगे सुनना था। बढ़े। नमस्ते आंटी, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा बात बताया। और अंकल जी आप कुछ बताइए, आप आंटी बोले जा रही है। नहीं बताइए क्या क्या बोलूं। आप इतने साल से इसके पीछे हैं और देख रहे हैं इतना ऊपर आ चुका है लड़का, आज टॉप गन बन गया है। जी जी, बहुत खुशी हो रही है देख के आप लोगों को भी, और कंपनी बहुत आगे जाए, यही हम लोगों की कामना है आप लोगों के लिए। हम सब वही कामना करते हैं। और छोटा भाई से भी कुछ पूछ लेते हैं, आपके बड़े भाई को देख के कैसा लग रहा है, इंस्पायर हो रहे हो आप? गुड फील हो रहा है सर, गुड फील हो रहा है भैया को देख के वहां पे। यही तो चाहिए। आप इफ यू आर मूविंग अहेड इन लाइफ, आपकी फैमिली आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। नमस्ते आप तीनों को, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड वी होप दैट वी कीप शाइनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड एज अ टॉप गन। नमस्ते, थैंक यू सो मच। प्लीज डू योर सिग्नेचर, you are our celebrity, and with that we will conclude with the first round of awards. Thank you so much all our guests and leaders present over here for your time. Thank you so much. And now all the top guns, let me tell you, we will have a small break and uske baad we will start with the event. And now आप लोग कहीं मत जाइए, आप लोग रिलैक्स करिए, 2 मिनट थोड़ा पानी वानी पीजिए, मैं भी पी लेता हूं, क्योंकि आप लोग का मनोरंजन करने के लिए कोई यहाँ पे आ चुका है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, टॉप के आप लोग के बारे में इतना कुछ पता चला। आप लोग रोमांटिक हैं, किसी को गाना पसंद है, किसी को नाचना पसंद है, someone likes inspired from your father, inspired from your seniors। लेकिन क्योंकि माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है, थोड़ा ठंडा करते हैं, राइट? सो मैं आपको बता दूं, फॉर यू गाइज, माहौल ठंडा करने से पहले थोड़ा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि किटकैट ब्रेक तो बनता ही है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एंड देन विल कम बैक विद यू गाइज टू कंटिन्यू विद द इवेंट इन 5 minutes. ओके, प्लीज टर्न अप द म्यूजिक।
तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां टुटे दिल नू सांभी फिरदे की फायदा मुटियारे 12 साल मज्जियां जराइयां छड्डे तख्त हजारे हर साह नाल याद तैनू करदे रहे कोई साडे वांग करूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां मेरे दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा कहंदी हुंदी सी चन तकरा बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठां सहारे ला दे उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वालीए दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वालीए दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वालीए दिल तेरा जदों टुटूगा रास ना आया तैनू नी जो दिल दा महल बनाया सी तोड़ के मोती फुल्लां दे उस महल च बूटा लाया सी नी जिवें सानू छड्ड गईयां नी तू अल्लड़े जदों तैनू कोई छड्डूगा तां ओ जिवें सानू छड्ड गईयां नी तू अल्लड़े जदों तैनू कोई छड्डूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा दिल नाल लारे नी तू लाउण वाली है दिल तेरा जदों चेक 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 साउंड चेक वो सेकंड नंबर माइक कौन से लाइन पे सेकंड नंबर किस पे चेक चेक साउंड चेक इज लाउड इनफ ऑब्वियसली मुझे सिर्फ एक बार लेवल्स बताना लेवल्स कितना है फ्लैट है क्या लेवल्स लेवल्स फ्लैट है क्या सेकंड नंबर का सब फ्लैट है एक बार कैन यू गिव मी लाइक बेस तीनों लेवल हाईएस्ट मिड्स लोज एट 20% कैन यू गिव मी all three at 20% just to check if it's filling up the room check this is little better can we take it up to like 40% all three and this is better no thoda okay check so this is the volume at which I'll be performing highest is this much lowest is this much okay ab nahi I think thoda nahi it's loud enough but thoda echo aa raha hai gain बढ़ाया क्या आपने अभी नहीं थोड़ा कम कर दो चेक 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 ओके आई थिंक दिस इज गुड अभी गेन कितने पे अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए हाँ बिकॉज रूम भी फुल हो जाएगा बाद में ठीक है आई थिंक दिस इज गुड नो एट द बैक हाउ डज इट साउंड एट द बैक या इफ यू गो ऑल द वे बैक इट्स लाउड इनफ नंबर वन इट्स क्लियर ऑल्सो राइट या ओके कूल तो अभी लेवल्स कितने पे हाईएस्ट मिड्स लोज कितने पे अभी तीनों हाँ कितना हाफ से थोड़ा कम है थोड़ा ज्यादा ओके ठीक है एंड और गेन कितने पे गेन पे 2 dB पे 3 dB पे रखा है 3 पे रखा है ठीक है आप रहोगे ना यहाँ पे अगर लग रहा है थोड़ा फट रहा है तो थोड़ा गेन कम कर देना हाँ मैं थोड़ा आई विल गो लाउडर इन दैट केस
Mic check. Okay. I request all the Top Guns to please get back to your seats, get comfortable. We'll continue with the event. This is the second half of the event. This is your night. It's a celebration. So we're going to start in a few minutes. Please be seated. Enjoy, keep drinking, eating. Because इसके बाद बहुत ही मजा आने वाला है. So okay, so ladies and gentlemen, let's continue with the event. I'm your host, Amrit Kashyap. It's been a pleasure hosting for you guys. I hope this is going to be a fun event. And now, there is a very special performance for all of you guys. जितने भी लोग हमारे साथ Zoom में connected हैं, popcorn ले लीजिए, समोसा ले लीजिए, pizza ले लीजिए, because अब बहुत मस्ती होने वाली है. So all the people who are connected with us, let me tell you guys, we have a very special performance for you guys. This act is a corporate survivor who has gone from selling drugs to selling jokes for a living. He is a very own Mumbai boy, and he is going to tell us why he likes performing for the sales team. Ladies and gentlemen, please put a huge round of applause for none other than our very own talented, famous, and popular Mr. Puneet Paniya on stage, everyone. ताली बजानी चाहिए Top Guns के लिए, sir. Mr. Puneet Paniya on stage, everyone. Top Guns ताली बजानी चाहिए इनके लिए. Hello, good evening. Thank you for having me here. How are you guys doing? Doing good? I can't hear you, man. Great. It's so good to be here. I like performing for a lot of teams, but sales teams especially. Because they're so full of energy, dude. They have to be. It's a very tough job. It's an outdoors job. It's a self-motivating job. In fact, I have performed for so many sales teams now that I sometimes feel that sales teams are often more creative than marketing teams also. They have to be. Because PPT में हम आपको पूरा ब्रह्मांड दिखा देते हैं. नेक्स्ट डे कस्टमर को आपको मिलना है. आगे लाइन लगाए 20 लोगों का. Finally, you reach the doctor and you only have time enough to say, "Good morning, sir." Call हो गया. It's a tough job. In sales, you have to face both marketing and reality. It's often a huge difference, right? That's why I like doing these shows. But of course, marketing team is also like, they're friends of mine. I've been there myself. How many guys from marketing are here? काफी लोग हैं, 3, 4, 5 लोग हैं. They're very busy people. Huh? वो marketing team का नाम अलग अलग होता है, पता है? Different companies, they call them with different names. No, यहाँ पे क्या नाम है? Marketing ही नाम है, sir. Marketing. Okay, it's simple. Okay, good. Sometimes we have very fancy names. No, marketing, business development, customer acquisition specialist. लग रहा है कस्टमर को वो क्लोरोफॉर्म सुंघा के लेके जा रहा है अंदर, किडनैप करके. They're busy all the time. क्या है, नाम कुछ भी रख लो, मार्केटिंग टीम का काम एक ही होता है लास्ट में, फॉलो अप. Always following up. Even right now they're doing it at the back. फोन कर सब लोग को, कहाँ पहुंचा मान लो. They're always tracking something or the other. It's good experience. I think after a product manager, you can become the MD of a courier company directly. Busy people, no time left for personal life at all. No. If you're in marketing, in Diwali, you do not do family get-togethers. You do CMEs. On your anniversary to your wife, you don't give a bouquet, you give a brand reminder card. Sorry, budget नहीं था इस बार, क्या कर? To your girlfriends, you can't say I miss you. You say, please try my new flavor.
I think the toughest job in the industry, tell me if you agree or not, is that of an area manager. जो यहाँ पे भी नहीं आज देखिए, they're not here with us today. Can I have a round of applause for all the area managers of the company? Yeah, tough job. What a difficult job, dude. You have to play all roles: friend, philosopher, guide, Sautan. Multitasking. In the olden days, when there would be a vacancy in a headquarters and you're not getting anybody new to fill it up, area manager would do the calls also. That position was called sofa cum bed. Multi-purpose. Area manager gets the worst of both worlds. Very difficult. I feel that area manager in a pharma company is like a bahu in a joint Indian family. सास भी सुनाती है, पति भी सुनाता है, बड़ा होके एमआर भी सुनाता है. I know people are here from around the country here. So how many of you are from Mumbai? है कोई यहाँ पे? From Maharashtra है कोई? One person. कहाँ से हो सर आप? Dhule. Okay. There? Mumbai. All right. The rest of you are from across the country. Yes? Yes. Yeah. Great. What a diverse team to perform for, man. I always travel for my shows and I do shows in South also. But whenever I perform in Chennai or further south, no, I begin the show by apologizing first. That guys, I'm sorry, I might slip into occasional Hindi. But don't mind, Hindi is not my mother tongue. It is not even national language. National language is corruption. So bear with me, friends from the south. If you don't follow something, I apologize, but I'll try to connect with all of you as far as possible. Yes? Yeah. Who else do we have? We have marketing. Do we have HR? No, okay, it's okay. I don't have HR jokes because no advance payment. So, who else? Do we have finance? से है कोई यहाँ पे? Only sales and marketing. Okay, then we can do a lot more jokes actually. Finance teams are very benevolent teams. No? They create work for other departments. The number of forms and documents had to register for a new stockist. You think the stockist can go to UK visa also from this? So much long process. Different teams keep coming up now because there's more paperwork now involved. No? I think across the industry, the brightest future is of the legal department. There's so many new rules coming up that I think after a few years, one lawyer will accompany an MR on every call. And he will do all the detailing. In the end, all you can say is, sir, dua mein yaad rakhna, sir. There's one team that we forget a lot, That team is like your old best friend. You only remember them when you really need them. Month end. They are your supply chain, your distribution colleagues. You don't even remember the names also. That's name क्या Rahul नाम था Rahul कैसा है बीवी बच्चे कैसे हैं काम है तेरा only once a month. Difficult times for everybody in sales when you have to meet your targets. Of course, you guys have already exceeded your target. आपको क्या बोलूँ मैं अभी? Targets are always difficult for a reason. I think targets in pharma companies used to be like elections in India. Majority looks impossible, but you have a little bit of confidence also. कि कुछ तो करके थोड़ा एक्सटेशन, थोड़ा आउटस्टेशन, थोड़ा इसका, थोड़ा उसका, थोड़ा इंस्टीट्यूशनल करके गठबंधन सरकार तो बना ही लेंगे हम लोग कुछ भी करके कर लेंगे. But end of the month, I would see my colleagues in sales and in even supply chain. They're always on the phone. It's like the phone has become a part of your body. And I would always feel कि what must your family be thinking? Because they can only hear one side of the conversation. Hello, माल आया क्या? ट्रक निकला क्या ट्रक? क्या ड्राइवर जेल में है? फैमिली सोच रही पापा कहाँ काम करते हैं? फार्मा की दाऊद. But I worked with some very stalwart people in sales over the years, And you cannot work in sales without picking up some colorful language also. One of your stockists has reached the credit limit for the month, and you can't bill any more to him. You don't say don't bill, you say अग्रवाल को माल मत डालना, उसका अभी नसबंदी हो चुका है. Last day of the month is almost here.
2 hours are left. Your manager calls you and he's like, सुन एक काम कर, 2 और पेटी डाल दे. You're like, नहीं सर दर्द हो रहा है सर. You're like, नहीं मेरी बात सुन, सलीम एंड सन्स को फोन कर, बोल मैंने बोला है. You're like, सर नहीं सर, सलीम को मैंने यहां तक पेला, यहां तक. अगर 2 और बक्सा डाला तो सलीम का अनारकली हो जाएगा. तो साले को नहीं हो रहा है सर. But I worked for quite a long time, as you can tell. And I learned after 7 years in corporate life that there's one right answer to every question in corporate life. I'll get back to you. No matter what the question, right answer. Can I get the file? I'll get back to you. Which way is the loo? I'll get back to you. So try it. It works always. Even in married life, it can work. Don't get into conflict. I'll get back to you. The jargon is very important. I learned that in every email, memo, and obituary, always include this magical phrase, as discussed. Everything solves itself. Because people do so many meetings and discussion, like, ये बोला होगा ना? ये क्या लिखा है? Salsa dancing with the boss on Friday. चलो लिखा है, जाना पड़ेगा. As discussed. 7 years in corporate, I still don't know what smart casuals means. हर बार आता है ईमेल में, क्या होता है मैडम बताओ, कभी एचआर को पूछा मैंने, एचआर लेडी लाइक, अरे कुछ नहीं है सर, डोंट थिंक टू मच, मिक्स एंड मैच. तो मैं गया एक दिन ब्लेजर और चड्डी पहन के, मिल गया सिक लीव, जाओ घर पे जाओ. I feel sometimes that people in corporate, they don't even talk to each other anymore. No. They send gentle reminders. Gentle reminder 1, gentle reminder 2, return of gentle reminder. हमने एक आदमी तेरे बाजू में बैठा है, जिंदा भी है, उसको एक कोनी मारना ऐसा, नहीं ईमेल भेजेगा. Very passive aggressive. But have you noticed in any company you go to, people are very nice to you on your face and talking to you, they're very nice and polite. Hey man, what's up? Long time. Let's catch up someday. तो वही आदमी ईमेल में आपकी बजा रहा है, लंबा लंबा FIR भेज रहे हैं. You have not met your targets. You are not serious about your goals. I lost my faith in you as a human being. मैं किसका खून किया यार? I thought we were friends. That's why jargon is important. You should learn jargon. It has to be formal, no? Like sometimes I see now in new companies, the people have become very casual now. They're sending emojis in the email. I mean, how lonely are you, dude? Because can colleagues be friends, really? You think? I don't know. I think colleagues are like siblings. You don't get to choose them, but you're stuck with them. And the boss has one favorite, and you hate that guy, but you can't say it out loud. It's like family only almost. No? This was a long time ago. Now things have changed. No? I see the energy here in the room is amazing. You can connect with people at home also. Imagine this was not possible so many years back. No? Just last year I was doing a Zoom show for a pharma company, like for the audience all across the country. It's very difficult to connect like this. No? I told HR, madam, we need the audio and the video to be on. Because laughter is a grammar of our medium. Without laughter, this will sound like a political rally. Sabko ration milega dosto. So finally show has started and I'm trying to talk to a blank laptop screen. So I started doing jokes in the chat. Wahan pe aa reply. And not even jokes, simple. I was just asking which headquarters are you from. People are saying, sir, but Darbhanga, sir, Darbhanga. Patna. People want to communicate, right? And you have to find a way to do it somehow. I sat through the whole show. बहुत पकाया वो लोग, सब कंपनी का बड़ा दिग्गज लोग आके पकाया, पॉलिसी में ये लिखा है, शास्त्रों में वो लिखा है. Finally at the end I said, okay, now before we end the event, we'll all put the audio and the video on. तो हम लोग ये ऑप्शन था तुम्हारे पास, मेरे लिए नहीं किया. And I wanted to see अभी क्या करने वाला है इसमें, what are you going to do with this great technology? So I'm waiting back to see क्या होने वाला है. तो all of you guys, all the sales guys across the country,
अपने घर में बैठे हैं, अभी हम सब लोग थाली बजाएंगे. Dude, what a sight to see hundreds of people, grown men, taxpayers, in their respective living rooms. Family है साइड पे, बच्चा देख रहा है कि क्या क्या करना पड़ रहा है पापा को मुझे कोडिंग सिखाने के लिए. You need involvement, right? You need to be there in person to really know anybody, which is why it's always great to perform live for any team, right? In fact, I feel that salespeople, they really understand comedy because it's sort of what you do also in your job. You talk for a living, right? To get attention is so difficult from doctors. No? So difficult. I remember once I was working in UP in an auspiciously named town called Bulandshahr. Yeah. Small town, Bulandshahr. कोई बात नहीं. We are meeting a GP. 50 पेशेंट बड़ा है तो आज बाहर बहुत भीड़ लगा है, कोई रो रहा है, कोई झगड़ रहा है, कहने लगा पड़ा है हाथ में. I met a doctor outside to show him the product. I said, doctor, नया product आया मार्केट में, आपको दिखाना. बोलता है, talk in English, young man. I said, sorry sir, like my bad. No, I assumed it's not good. No, so detailed in English everything. He's like, please come inside, have a cup of tea, maybe then you can go. I said, okay, thank you sir. We go inside the chamber. Doctor shuts the door. बोलता है, अच्छा अभी तनिक बताइए आपने बाहर क्या कहा वहां पे अंग्रेजी में. So you learn so much from the customer, no? You think they're not listening, but they're paying attention, dude. It's their job to do it, no? Once I was detailing, going through the motions. Doctor said, I have a question. I'm like, ये भी होता है क्या? Sir, sure, what question? बोलता है, who is this man in your folder? I'm like, no sir, why? बोलता है, I really admire this man a lot. I'm like, कौन है यहाँ पे? कौन आ गया? बोलता है, this man has all the problems in the world. He has back pain. He has acidity. He has piles also. He's still smiling. I'm like, sir, sorry, my bad. I will change the photo. Same man, all the visual. It was some problem usko. He's still running around everywhere. No? I think we should work a little bit harder in marketing, I felt. No? Because often meetings would happen, but we would feel that we are not doing enough for you guys. No? Because meetings would end up being occasions where the marketing guys, they would pretend to motivate the sales guys. And the sales guys would pretend to get motivated also. It's like a symbiotic relationship. After lunch on the third day, people are so bored. No? They're like, sir, आपको जो चाहिए बोलो. जय जवान जय किसान हम बोल देगा चलो घर पे जाने का बस. It was so boring after a while. No, I used to work quite some time ago. That time this new movie had come out called 300. Remember that movie, guys? 300. All the marketing guys would use clips from that movie to motivate the sales team. Like a highlights package. Like a montage with background music. ये चल रहा है स्क्रीन पे, उस पे लोगों का हाथ पांव कट रहा है, खून की नदियां बह रही हैं, इसका मुंडी रोल के गिर रहा है ऐसा, और ये दिखा के चिल्ला रहा है मार्केटिंग वाला, आक्रमण करो कंपटीशन पे. और फ्रंट सीट में शर्मा जी खर्राटे मार रहे हैं, गूंज रहे पूरे ऑडिटोरियम में. अरे शर्मा जी कोई मर रहा है यहाँ पे देख लो. बट यू कैन से शर्मा जी सीनियर आदमी है यार. He's been in the company for donkey's years. From before you had even joined MBA, he's been there. You can't teach him. He's seen everything, dude. Sharma ji has seen 3 governments, 4 World Cups, and 2 mergers in the company. What are you going to teach him, dude? Sharma ji has spent more time on the stockist ka sofa than you have spent on earth. You can't teach him. Sharma ji, उसकी उम्र 40 की कमर 45 की हो गई है. उसके 2 बेटे, एक कॉलेज में, एक जेल में. उसके लाइफ में आक्रमण कम, आर्थराइटिस ज्यादा है. So you learn from the senior people also, no, on the field, because you are still new. MBA किया आपने, आपका स्कूल वही था स्टेट बोर्ड का, तो आपका आदत गया नहीं सब कॉपी पेस्ट करने का. By the end, no, I started thinking कि यार the most important KRA in this job may be being active on the office WhatsApp group. Very important. And office WhatsApp groups are only slightly worse than family WhatsApp groups. And there are versions in every team. I have seen official, unofficial, illegal. और सब ग्रुप पे लोग वही होते हैं, कांड अलग अलग कर रहे हैं. Same guy, one group good morning, second group happy Diwali, third group Sunny Leon.
And sometimes he will send to the wrong group by mistake. Then he has to apologize. He says, sorry, sir, my son has become very naughty, sir, So kids grow up so fast these days, sir. So internet, no, sir, I know. So, sir, I'm a sanskari fellow, sir. So Sunny is like my sister, sir. So you guys should be careful when you're sending WhatsApp message. आप check करो कहाँ पे जा रहा है message. Because I know you're multitasking all the time. Helmet पहना नहीं आपने, bike पे एक हाथ से आप भेज रहे हो. So be careful, no? कहाँ पे जा रहा है message? Very important. Where I used to work, no, big company which I can't name for security reasons. We had different groups. One group में only marketing guys were there, only guys were there. So on that group, anything was allowed. Veg, non-veg, Jain. You guys know Jain, right? It's a delicacy. It is prepared without 3 important ingredients: onion, garlic, and happiness. That's the missing ingredient. ये ग्रुप पे सब चलता था. Then we have second group. वो ग्रुप पे बॉस भी थे. So on that group only uncle jokes are allowed. You guys know uncle jokes, right? Simple jokes. Like I have 2 daughters, they are both girls. Haha. Textbook uncle. ये भेजना uncle खुश हो गया. He's Kapil Sharma fan, no? This group was okay. We had a third group, biggest group, which are all the guys from across the country plus director. So on that group only nonsense was allowed. Nonsense all day. Good morning, good afternoon. हमने काम कब करेंगे? Scroll कर रहा पूरा दिन. Some people were extra careful. No? They would send a story in the group, no, to please the boss. There was a farmer. He had 2 sons, 3 rabbits. लंबा लंबा पका रहा है. In the end, he will add himself. East or west, our company is the best. And you hate this guy. क्या गंदा पका रहा है? इसको मारो साले को. But you can't say it out loud. No, he's a colleague. Dude. You stay quiet. Then some random friend will reply, "Hey, very nice, sir, Suresh. Very nice. Keep sending." Now everybody has to reply, "Ha, Suresh. Very good, Suresh. Keep sending, Suresh. Superb, Suresh. East or west, Suresh is the best." But on the day of sales closing, not a single message. Not even a hi. Sannata. Then the boss would send a random message. Life is a journey. Immediately 100 replies. Wow, sir, kya bola hai, sir. Superb, sir. Totally agree, sir. Sir, are you sure you're not Jesus, sir? Then the boss would reply, sorry, wrong group. Again, silence. I think the sales guys are a separate group amongst themselves just to inform each other. Like a SOS group, a secret shadow group. No forwards वहां पे, only emergency. देख बॉस को रिप्लाई कर रात को 2 बजे कौन रिप्लाई करता है? Agree with you, sir. हमने सो जा, तेरे बीवी बच्चे नहीं है क्या? What happened because of all this positive reinforcement, all this yes-manship? The boss started believing in himself a lot. He started talking in motivational quotes even offline. I would just say, boss, did you see the PPT I sent you? He's like, seeing is believing, young man. I'm like, sir, ये सब ठीक है, but sir, target जा रहा है आपका target. That target is just a number in your head, like your age and your CTC. Like, sir, आप क्या बोल रहे हो sir? You're senior guy, हम IIM sir. ठीक है, आप बोलते हो तो which way is the loser? To pee or not to pee is not the question. The real question is how long can you hold it in? Young man. हमने क्या सटिया गया यार आदमी. But I learned something that day, very important. I learned that there's a very fine line. There's a fine line beyond which you start believing your own nonsense. And that line is called leadership. Leaders are full of themselves, but they're confident. No, confidence is very important. Confidence होना चाहिए. वो नहीं था मेरे में. So I left. Now, sometimes I look back at my job. I sometimes feel guilty. Yeah, it's like we were getting paid just to attend meetings. Unlike this one. Meeting चल रहा है 7 घंटा, 8 घंटा. आप गंदा चाय पी रहे हो. पता नहीं बात दिन है, रात है. फैमिली है, मर गया.
You start asking yourself deep existential questions. What am I doing with my life? What will I do after this meeting? If I go back home now, will they even accept me? कि ये कौन आदमी है डैडी बना के? पापा आप पापा आप पापा 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 मम्मी नया पापा लेके आए डीमार्ट से. क्योंकि वो पीपीटी चल ही रहा है, अनंत काल से चल रहा है. यानी सतयुग द्वापर युग आके चला गया, पीपीटी खत्म ही नहीं हुआ. यानी वंडरिंग कौन बनाया इसको, कैसे बनाया होगा, क्या बीती होगी वो इंसान पे. इज इट इवन पॉसिबल टू गेट पेड इनफ टू डू दिस वर्क? 170 स्लाइड कौन बनाया था? इवन इफ यू कॉपी पेस्ट इट टेक्स सम टाइम, नो. कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल, आदमी पान वाला बन गया बैठ के. 170 स्लाइड तू कहना क्या चाहता है? And how pompous of you, right? Even Buddha spoke in bullet points. Buddha was a nice man. No, he didn't not say much. He said very few things. He said, life sucks, don't even try, buzz off. That's still relevant, no? 170 आप साबुन बेच रहे हो आप तो. Sometimes you would go into a trance, no? Like a religious experience, out of body experience. You would feel कि यार ये पीपीटी ही दुनिया का अनंत सत्य होगा. जब पहले कुछ भी नहीं था, न दिन थी न रात था, न जमीन थी न आसमान था, तब बॉस बादलों पे बैठ के हुक्का पी रहा था और स्लाइडें बना रहा था. खत्म ही नहीं हो रहा है. And we had a very favorite room to do all the meetings, a very compact office, the corner office boss ka. That room was completely soundproof, waterproof, logic proof. Nothing could go inside, like a bomb shelter, like a space capsule. Time would stand still inside. On certain days, you could almost see Einstein's ghost in the meeting room. Because time has absolutely stood still. 8, 8:30, 9 बज गया. People are getting anxious to go home and they're tapping their feet. Uber check कर रहा है, घर से फोन आ रहा है, divorce कल. ऐसे में बॉस को वैल्यू ऐड करना है. बोला रुको रुको, इसमें ना एक स्लाइड, one last thing. इसमें ना ये स्लाइड में मजा नहीं आ रहा है. थोड़ा सा नाचो क्या आपके लिए? मजा क्या होता है, dude? You're a senior guy, you're from IIM, not Indore, पर फिर भी ठीक है, आप बोलते हो तो करना पड़ेगा कुछ तो. I had worked an entire day on this, no. I did not want to change it. So I went back and I just changed the X to Y axis. उसको मजा आ गया. पगार आ रहा है. That's why I would sometimes feel guilty. यार क्या नौकरी था. Sales guys are working hard every day. We are just coming to office every day. काम किया नहीं किया, salary comes. But then when I see the parliament, I'm like, they're better than politicians at least. No? At least we never threw chairs in the meeting. कि माननीय महोदय ये लीजिए मेरा feedback. I'm a public servant. Look at my red light. Look at my charge sheet. See, charge sheet in politics is your CV. You know? One-page CV. It's where you boast of your accomplishments. Like any LinkedIn CV. No? Played pivotal role in 4 scams. Leadership role in 2 murders. 4 half murders. You guys know what a half murder is? A Mumbai term. It's like distance MBA. It's not hands-on experience, but intention is clear. I'll tell you one last thing before I wrap up for the evening. Are you guys having fun so far? Yes? Yeah? At the back? Yeah? See, when you work in a very big company, a big team, sometimes you feel like you're lost in the crowd, because every day somebody or other will leave the company and they will send you a sentimental farewell note. And you're wondering, ye kaun tha aadmi? I don't even know this guy. He's sending me this long love letter. Because every farewell note would look the same. It would begin like this. Dear friends, today, with a heavy heart and a light pocket, I say to you, फिर insert Google search French word for goodbye. लिखा है adios Romeos. And you're wondering, ये आदमी को मराठी नहीं आता है. ये फ्रेंच फाड़ रहा है यहाँ पे.
It's going on and on. Today I would like to thank my father, my mother, my dadi, my दूध वाला. हमने ऑस्कर नहीं उतर नीचे. Random ज्ञान चिपका रहा है. Guys, I have learned only one thing. Life is a journey. तेरे को कौन पूछा तेरे को? सुबह सुबह without consent motivating people. I just reach office 2 घंटा में मुंबई में आया ट्रैफिक में फंस के. अभी ये भाई बोला life is journey. Then he will end abruptly. Like, all right, guys, I'm leaving, but please remember, add me on LinkedIn. Goodbye, losers is gone. And you're wondering, यार ये भी गया यार. अपना टाइम कब आएगा? Because everybody has a farewell note written in drafts. Or at least you have a mental note of it. कि मुझे बॉस एक बार और कुछ बोल के दिखाए. उसके मुंह पे मारूंगा इस्तीफा, मुंह पे. कफन मेरे जेब में. मैं पैसों के लिए काम नहीं करता. मेरा पैशन है. बहुत देखे ऐसी कंपनियां. ऐसी 10 कंपनी में खरीद कर बेच दूं, पता है. मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मेरा पैशन है. Excel. I was that guy one point. Excel was my passion. I was very good at it, पता है. I still remember all the keyboard shortcuts. It's like PTSD. I was so good at it. People from different departments in the company would come to see my performance on the keyboard. I was like Yanni on the keyboard. I had hair back then, so it was better. And I had believed it. I really believed that देखना एक दिन तेरा भाई ये pivot table से बंगला बना के रहेगा. But it never happened. Because you can get rich from a job, you don't get wealthy on taxable income. It was a very predictable job from there on. For me, it is in the head office. So I left and I do this for a living now. It's always great to come back and perform for sales team, especially because you guys are out there doing a very difficult job, especially after COVID. So I'm really grateful to have come here and I hope it was a good time for you also. Thank you very much. My name is Puneet. Thank you. Thank you, Sanjay sir, for having me here. I'm here because Sanjay sir called me. And I said, बिल्कुल आएंगे मंडे का दिन है, बिल्कुल आके मिलेंगे लोगों को. My name is Puneet Pania. For those of you who do not know yet, please see my work online if you like it. And I hope to see you, some of you guys, in person again at some other show somewhere else in the country. I keep traveling across. And my best of luck. My best wishes are with you. Thank you. Good night. Thank you so much. Mr. Puneet Pania, everybody, please. ये हमारे सेलिब्रिटी टॉप गन के लिए ताली होनी चाहिए. अब स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. हमारा सेकेंड हाफ बचा हुआ है. तो फिर क्या कुछ इशू हो गया है सर. सर आपने देखा क्या, वो मैं बाइक से आया था, चाबी नहीं मिल रहा है. तुम लोग देखे क्या, चाबी मिला क्या मेरे बाइक का? कहीं पे वहां पे गिरा था. वॉशरूम में गए थे ना, आपको मिला था ना, मैं वॉशरूम में मेरा बाइक का चाबी मिला क्या? गिरा था कहीं पे यहाँ पे. आपके पास बाइक का चाबी एनीवन नहीं मिला आपके पास? ओके. Thank you so much, Puneet Pania. Everybody, please. ताली होनी चाहिए इनके लिए. नहीं, ये आप लोग के लिए. हाँ, क्या लगता है? 7 लोग और बचे हैं, 7 टॉप गन्स. क्या लगता है आप लोग में से कौन लेके जाएगा ये बाइक की चाबी आपके साथ घर? देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं. तो लेट्स कंटिन्यू विद अवार्ड फंक्शन. प्लीज इसको संभाल के रख लीजिए, किसी एक को ये मिलने वाली है. एंड शुरू करने से पहले आप लोग में थोड़ा जोश आना चाहिए. तो एक यूनिटी जो है ना, हमारा मोटो है,
in Wildambic, right? So please, एक गाना हो जाए आप सबके लिए, साथ में गाएंगे and then we continue with the award show. तो एक गाना है, एक पिक्चर है लगान, which talks about unity, right? We believe in that because together we stay together and we grow together. So please play the song. No, not this. From the movie Lagan. साथ में गाएंगे and then we continue. For all of us, come on everyone. Woo! All the Top Guns and all the Zoom call people जितने भी attached आप सब भी गाइए हमारे साथ. जितने लोग वहां पे हमारे साथ connected है, हम सब के लिए ये हमारी successful party है. We have worked really hard, guys. ये हमारी success party है for the launch of our brand, Wildambic. Everyone in the Zoom call, आप सबके लिए साथ में गाएंगे हम आपके लिए, आपके साथ कितने लोग हैं? Come on, everyone. Come on, everyone. बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, बार बार हाँ, बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, बीत जावे जो टकरावे, चले चलो, भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो, टूट गई जो उंगली उठी, पांचों उंगली जो बन गई मुट्ठी, एका बनता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो. Thank you so much, all the Top Guns. आप सबके लिए ताली हो जानी चाहिए फिर से. And now let's continue with the award ceremony. And क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो बुलाते हैं स्टेज पे फिर से हमारे very own Mr. Amit Bedi sir, Cluster Head, Sanjay sir, Divisional Head, and our very own Charlie sir on stage, on dais, so that we continue with the event. And of course, we have Amit sir and Manivanan sir on stage as well. Please sir, all four of you. Leaders के लिए ताली बजानी लेनी चाहिए. Talking about our first Top Gun, लेकिन उससे पहले मुझे वो कहाँ गया चाबी? अच्छा, वो क्या है ना कि मुझे ऐसा बताया गया है कि सर यहाँ पे आज किसी एक को वो बाइक की चाबी मिलने वाली है. काफी अच्छा दिख रहा है, तो मुझे लगता है बाइक भी काफी अच्छी होगी, राइट? जितने भी लोग जूम में हैं आप लोग देख लीजिए, ये बाइक की चाबी इनमें से, और 7 लोग बचे हैं, किसी एक को मिलेगी. वो एक स्पेशल टॉप गन, देखते हैं किसको मिलेगी. आपको क्या लगता है? डू यू हैव एनी चॉइसेस एंड फेवरेट्स? कुछ नहीं, you also don't know, guys. they wish that too, but then no worries. Let's start with our 9th Top Gun, Mr. Ravi Khandelwal, जो कि मथुरा से बिलोंग करते हैं. उनका जो हेडक्वार्टर वहां से है. एक्सपीरियंस विद एलेम्बिक उनका 4.3 इयर्स का रह चुका है. एस्पायर करते हैं टू वर्क एज ZM. रीजंस फॉर सक्सेस है उनका डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, एंड उनके PCPM ऑब्जेक्टिव था ₹50,000. हॉबीज happiest moment in life is to tour with family. Biggest inspiration है Mr. Amit Kumar के एरिया मैनेजर जो है रह चुके हैं, और फेवरेट सॉन्ग है तुम ही हो from आशिकी 2. रवि खंडेलवाल हमारे 9th Top Gun के लिए ताली बजते रहनी चाहिए. और मुझे अभी भी इंतजार है कि वो कौन Top Gun है जिसको वो बाइक की चाबी मिलेगी. अमित, आपसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा, प्लीज कैन आई हैव अ माइक?
यहाँ पे लिखा है कि द बेस्ट थिंग जो आपने किया है वो है टूर विद फैमिली, तो कुछ उसके बारे में बताइए, हम सबको कहाँ गए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा था? सर फैमिली के साथ में मेरे अभी रिसेंट में सर 1 साल के अंदर ही सर 2 टूर हुए। एक तो सर हम लोग मनाली गए थे और अभी सेकंड सर कुछ टाइम पहले नैनीताल गए थे। एंड सर इट वाज गुड सर विद फैमिली सर। And this is only possible because you are working with Alembic and these guys are helping you to move and share time with your family, Yes, sir. right? Yes, sir. Yes. इसीलिए, right? Yes, sir. तो obviously we believe in staying together and growing together, जो कि ये यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे लिए, तो प्लीज इनके लिए ताली हो जानी चाहिए। थैंक यू सर। एंड क्योंकि आप हमारे सेलिब्रिटी हैं तो आपके लिए रजिस्टर रखा है हमारा टॉप गन, अब हमारे 9th टॉप गन है, प्लीज साइन कर दीजिए स्टाइल में। so much, sir. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ताली हो जानी चाहिए हमारे 9th टॉप गन के लिए, रवि खंडेलवाल के लिए। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे 10th जो टॉप गन है उनका नाम है मिस्टर मुकेश मौर्य, जो कि जौनपुर से है, उनका हेडक्वार्टर वहां से है। एक्सपीरियंस उनका 2.5 इयर्स का रह चुका है। एस्पायर करते हैं टू गिव सो मच मोर टू एलेम्बिक। द रीजंस फॉर सक्सेस उनका ये रहा है कि डिटेलिंग, कन्वर्जन एंड रेगुलर फॉलोअप। एंड उनका पीसीपीएम ऑब्जेक्टिव था ₹50,000। उनकी हॉबीज हैं लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग क्रिकेट, एंड की माइलस्टोन्स इन लाइफ है व्हेन ही जॉइंड एलेम्बिक, एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, जो कि उनका ड्रीम कंपनी था। तो ताली होनी चाहिए, एलेम्बिक कंपनी ज्वाइन करना चाहते थे, ज्वाइन किया। इनका भी हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ है हिज वेडिंग। उनके बिगेस्ट इंस्पिरेशन है संदीप महेश्वरी सर, एंड ऑफ कोर्स फेवरेट सॉन्ग है अखियों के झरोकों से अच्छा, मिस्टर ओल्ड सोल। हमारे 10th मुकेश मौर्य, everyone, our 10th doctor। भाई को भाई की चाबी मिली। ओह नहीं, कोई बात नहीं है कि तुमने टॉप परफॉर्मेंस किया है हमारे टॉप मुकेश मौर्य। टॉप गन्स, आपको बता दूं कि इनकी फैमिली हमारे साथ है। नमस्ते आप सबको। और बताइए कौन कौन है यहाँ पे? आपके पापा? पिताजी हमारे हैं। और वो छोटा भाई है? छोटे भाई। अच्छा, और वो छोटी सी? वो हमारे भाई की। अच्छा, आप लोग, ये लोग कहाँ से हैं अभी? आप लोग सब कहाँ पे हैं? ये लोग घर पे हैं, जौनपुर। जौनपुर में ही है। और कैसा लग रहा है आप सबको आपके बेटे को यहाँ देख के? बहुत अच्छा लगा। आंटी जी कुछ बताइए, आप तो खुश लग रही है, क्या बात है? साउंड का थोड़ा इशू, कोई बात नहीं। आपके भाई है ना, बड़े भाई छोटे भाई है? छोटे भाई है ना, थोड़ा बताइए कैसा लग रहा है, घर का माहौल कैसा है जान के कि ये टॉप गन बन चुके हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। अरे क्या बात है, आपके बड़े भाई है ये? जी। तो कैसा लग रहा है इंस्पिरेशन लेके इनसे, इस तरह का परफॉर्मेंस आप भी देंगे, आप भी टॉप गन बनोगे? जी सर, बिल्कुल, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। अब क्या आपके पापा मम्मी दोनों टॉप गन से तब जाके आप टॉप गन बने हैं, है कि नहीं? आप सबको नमस्ते, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, आपका बेटा ऐसे आगे बढ़ते रहे, हम सब ये कामना करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नमस्ते। और अब आपको पता है क्या करना है, आप सेलिब्रिटी है हमारे, सिग्नेचर कर दीजिए, फोटो वोटो हो गया आपका तो ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, our 10th टॉप गन ऑफ द डे। और अब हमारे जो 11th टॉप गन है उनका नाम है मिस्टर शुभम सिंह, जो कि आजमगढ़ हेडक्वार्टर से हैं। एंड उनका जो एक्सपीरियंस रहा है ओलंपिक के साथ 3.9 इयर्स का, एंड वो एस्पायर करते हैं टू गो टू द टॉप पोजीशन। सर आपके पोजीशंस पे ये अटैक करने वाले हैं, एंड उनके रीजन ये है सक्सेस का कि वो राइट सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर्स करते हैं, टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स, एंड ऑफ कोर्स रेगुलर रिमाइंडर। इनका पीसीपीएम ऑब्जेक्टिव था ₹55,000। हॉबीज था क्रिकेट, एंड उनका हैप्पीनेस ऑल इंडिया नंबर 1 इन ओलंपिक एवर। ताली होनी चाहिए इनके लिए, ऑल इंडिया नंबर 1 मिथिलेश कुमार यादव, एंड फेवरेट सॉन्ग भूल भुलैया। ये शुभम सिंह हमारे 11th टॉप गन परफॉर्मर ऑफ द विल्डेम्बिक ग्रुप। ताली होनी चाहिए शुभम के लिए।
शुभम सिंह है ना? शुभम सिंह, कैसा लग रहा है आपको? Can I have the mic? और आपको बाइक मिला कि मोबाइल मिला? मोबाइल मिला था। चूक गए आप, कोई बात नहीं, मेहनत जारी रहेगी, कोई ना किसी को मिलेगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको मिल सकता है। पर मुझे ये बताया गया है कि आपकी फैमिली भी हमारे साथ कनेक्टेड है। अरे आपकी फैमिली दिख रही है हमें यहाँ पे। कहाँ पे हैं ये लोग, कहाँ से हैं ये लोग? सब अभी गाँव में हैं। और कौन कौन है आपके? माता पिता और सिस्टर है। नमस्ते, कैसे हैं? ये सब हमारी टीम है, हमारी ग्रुप की। आपको कैसे लग रहा है आपको अपने बेटे को यहाँ देख के? ये कौन है बगल में? अरे बड़े भैया नमस्ते, क्या नाम है इनका? प्रवीण कुमार सिंह। बताइए आपकी फैमिली का हाल चाल, आपके देख के यहाँ पे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, 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 बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सबको। सब लोग सुन लिए। और आपके पापा को क्या बोल रहा है इनके बारे में? वहां से कि यहाँ से? हाँ, नेटवर्क भले ही वीक है लेकिन परफॉर्मेंस इनका जबरदस्त है। इनके लिए ताली बजनी चाहिए। और इनके भाई का नाम क्या बोले आपने? प्रवीण। आप सुन सकते हैं हमें? हाँ जी सर। हाँ, तो बस बताइए घर पे कैसा माहौल है इनको देख के, यहाँ पे इतना अच्छा टॉप परफॉर्म किया है इन्होंने? घर पे नहीं, पूरे गांव में जो जितने लोग इनके जानने वाले हैं सबके में बहुत खुशी का माहौल है। ये तो निकल के मतलब कि ये अपने गांव का टॉम क्रूज है ना? हाँ, जहाँ जाता है खेल मचा रहे हैं ये तो। और कुछ कहना है आप सबको? ऑल इन वन है ये। हाँ, ऑल इन वन है, इसीलिए तो टॉप परफॉर्मर है। और कुछ कहना है आपको आपकी माता जी को? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आंटी जी, आप तो इमोशनल हो रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? अभी तो बहुत आगे देखना है इसको। चलिए ठीक है। नमस्ते अंकल जी, आपको कुछ कहना है? जब घर का लड़का इतना आगे चला जाता है तो माहौल थोड़ा इमोशनल हो ही जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए, हमारे टॉप गन। नमस्ते आप सबको, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच। प्लीज सेलिब्रिटी सिग्नेचर कर दीजिए आप। हाँ, शुभम सिंह के लिए बस रहनी चाहिए दोस्तों, हमारे 11th टॉप गन परफॉर्मर। और अब आगे बढ़ते हैं। ये इनका नाम है चित्रसेन बाग। इनका मौका आ गया, इनका टाइम आ चुका है। ये है भुवनेश्वर से, 2.4 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और इनका एस्पिरेशन जो है वो है टू बिकम अ जोनल सेल्स मैनेजर इन ओलंपिक। मिस्टर चित्रसेन बाग हमारे 12th टॉप गन। इनके लिए ताली बजती रहनी चाहिए। इनका जो रीजन फॉर सक्सेस था, फुल्ली ट्रेन्ड marketing team before Wildambic launch, targeting GP who has very high patient potential with investing launching inputs and regular visit. इनका PCP objective था hobbies traveling, he might be in life, not a job at Olympic farm. He is good in life, helping to send the money to my brother for a buy a car. And biggest inspiration is Kenoli Jackets. Olympic gold medalist shooting. Favorite songs? Get ready to fight. इनका जो मैंने पढ़ा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इनके जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था ये था कि हेल्पिंग इंसेंटिव मनी टू हिज ब्रदर टू बाय अ कार। देखिए, जब आप मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं उनके लिए ये जो शौक होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भाई को हेल्प करना, माँ के लिए घर देखना। तो आपको कैसा लग रहा है ये ओलंपिक में आप काम कर रहे हैं, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं और आपका सपना था कि आप ओलंपिक ज्वाइन करें? जी सर। वो तो आपने कर लिया, फिर आपने भाई को भी हेल्प कर दिया। कैसा लगा? आपके लीडर्स यहाँ पे उनको बताइए। अच्छा लग रहा है। मेरा ड्रीम तो था, भैया का भी ड्रीम था एक कार खरीदने का। वो मैं इंसेंटिव का 85,000 उसको हेल्प किया था, तो इससे मेरा प्राउड मोमेंट है। चित्रसेन बाग के लिए ताली होनी चाहिए। हमारे 12th टॉप गन। जितने भी लोग हमारे साथ जूम में ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दो कि आप जब ओलंपिक में ज्वाइन करते हैं कि इट्स जस्ट नॉट अ कंपनी, इट्स अ फैमिली। आप
अपने फैमिलीज के जो एस्पिरेशन है वो पूरे करते हैं, आप इंस्पायर करते हैं बाकी सबको टू ग्रो, टू स्टे विद एलेम्बिक। सो दैट्स द ड्रीम। आपको अगर एलेम्बिक ज्वाइन करना है तो अभी कर लीजिए, और मेरा पेमेंट भी थोड़ा ज्यादा कर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। ओके, सो नाउ थैंक यू सो मच चित्र सिंह। प्लीज सिग्नेचर दे दीजिए हमारे सेलिब्रिटी, प्लीज पहले होनी चाहिए इनके लिए। और अब जो नेक्स्ट टॉप गन है उनका नाम है मिस्टर सुब्रजीत जेना। ये भी भुवनेश्वर 1 से हैं। इनका एक्सपीरियंस है 2.9 इयर्स का। इन एस्पायर करते हैं टू डू गुड टीम वर्क। इनके रीजन फॉर सक्सेस है डॉक्टर कन्वर्जन्स, प्रॉपर RCPA एंड गुड डॉक्टर सिलेक्शन फॉर विल्डेम्बिक। PCPM ऑब्जेक्टिव था इनका 50,000 का। हॉबीज थे बिल्ड गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर, एंड इनका की माइलस्टोन लाइफ में था टू बिकम अ GM। हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ है when Dr. B.K. Das started prescribing Wildambic, and his biggest inspiration is Sabir sir, and favorite song है देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। आ जाइए सुब्रजीत, मिस्टर सुब्रजीत जेना, our 13th Top Gun। Congratulations, सुब्रजीत। माइक किधर है? हाँ, सुब्रजीत रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आप सबको जूम में देखेंगे। अच्छा, इनका जो फेवरेट सॉन्ग क्या था? देखा है पहली बार। किसको देख के ऐसा लग रहा है आपको? कोई है अभी लाइन में है आपके? अरे रे, गर्लफ्रेंड है इनकी। मतलब शादी वादी तो प्लान चल रहा है, मतलब नेक्स्ट ईयर। तो अगर वो जूम में हमारे साथ कनेक्टेड है तो थोड़ा गा दीजिए उनके लिए, क्यों? उनको भी अच्छा लगेगा। गाना नहीं है। अरे क्यों नहीं, यही तो मौका है। लीडर लोग, क्या पता इंटरनेशनल चल जाओ आप। हाँ, चलिए चलिए, सबके लिए होना चाहिए। ये आपका मोमेंट है, दिस इज योर मोमेंट। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। बस 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 बस, काफी था काफी था। बेचैन दिल को करार। तो आई थिंक आप अपनी गर्लफ्रेंड से साथ भी आगे बढ़े, एंड एलेम्बिक के साथ भी आगे बढ़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी एंड प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ साथ में आगे लेके चलना है। थैंक यू सो मच सुब्रजीत, साइन कर दीजिए। एंड आवर सेलिब्रिटी सुब्रजीत जेना। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, अब टाइम आ चुका है काउंटडाउन का। देखिए मेरे पास यहाँ पे और 2 है, 2 टॉप गन बचे हुए हैं जितने भी जूम में देख रहे हैं। 2 टॉप गन है और 1 बाइक की चाबी। क्या लगता है किसको मिलेगा? धक 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 धक। देखिए 2 नाम मेरे पास है। एक है मिस्टर आशीष कुमार नायक जो कि भुवनेश्वर 3 से हैं, और एक है मिस्टर बी मलिक अर्जुन जो कि महबूब नगर से हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से किसको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर आशीष कुमार नायक को, जो कि हमारे 14th टॉप गन है, भुवनेश्वर 3 से हैं। इनका हेडक्वार्टर एक्सपीरियंस है एलेम्बिक 3.2 इयर्स का। एस्पायर करते हैं टू नेशनल सेल्स मैनेजर इन एलेम्बिक, एंड ऑफ कोर्स हिज रीजंस फॉर सक्सेस वेयर प्रॉपर डॉक्टर प्लानिंग, प्रॉपर RCPA, राइट इनपुट, इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलर विजिट्स। इनका PCPM ऑब्जेक्टिव अब तक का सबसे ज्यादा था, 1 लाख का। ताली होनी चाहिए इनके लिए। Outside game and listening music. Milestones here make up home. Happiest moment in life when I joined Element. That was my mistake. Biggest inspiration is Dr. APJ Abdul Kalam and favorite songs. Really. Yes, and now मिस्टर आशीष कुमार नायक। देखिए
अभी तक जो पीसीपीएम ऑब्जेक्टिव था सबका मैंने पढ़ा है, इतने लोग आ चुके हैं, अभी तक सबसे ज्यादा इनका था 1 लाख का। तो कैसा लग रहा है? 1 लाख का आपने सबसे ज्यादा किया, आपके लीडर्स आपके साथ हैं, बताइए कि सबसे ज्यादा आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो बताइए कैसा लग रहा है? नहीं वो एक्चुअली मेरा ड्रीम है 1 लाख का PCPM आपका ड्रीम है और अभी तक आपने 37 या 38 फैंटास्टिक। तो देखिए, बड़ा सोचोगे तभी तो बड़ा करोगे, राइट? जैसे इन सब का भी कुछ एम है, एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव इन एलम्बिक, दैट बड़ा सोचना है, बड़ा करना है। और आपका की माइलस्टोन था कि आप यू वांट टू मेक योर ओन हाउस, जो आपने बनाया है, जो आप अभी आधा अधूरा है, आधा अधूरा है, बट वो एस्पायर कर रहे हैं आप। और जैसे कि घर की बात कर ही रहे हैं, तो हमारे साथ शायद आपकी फैमिली कनेक्टेड है कि नहीं? कौन कौन है थोड़ा बताएंगे? नेटवर्क ड्रॉप हो गया। कौन कौन है आपके साथ यहाँ पे हमारे साथ? हमारे टॉप गन आशीष की फैमिली हमारे साथ कनेक्टेड है। थोड़ा नेटवर्क इशू है, बट वी विल कंटिन्यू। एंड उनके साइड से कि हमारे साइड से? वी विल वेट, तब तक बात करते हैं। अच्छा, आपने बताया कि इनके भी इंस्पिरेशन डॉक्टर, ओके, इनकी फैमिली आ गई। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? कौन कौन है आपके साथ? आपकी मम्मी है, माँ है और बड़ा भाई है। तो आप एलम्बिक के साथ 3.2 इयर्स से काम कर रहे हैं, और आपकी जो इंस्पिरेशन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो क्या टीचिंग्स है उनके जो आपको इंस्पायर करते हैं? वो एक्चुअली वो एक हार्ड वर्कर है मेजरली, राइट। और वो जितना भी बड़ा काम करता है उनका ग्रेव नहीं होता है, मतलब जमीन के ऊपर रह के ही वो करते हैं वो। सर, आपके जितने भी टॉप गन्स हैं सब लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं एंड रोमांटिक हैं, तो इसीलिए शायद सब टॉप गन से मैं भी थोड़ा रोमांटिक हूँ। मैं 16 टॉप गन बन जाऊँ क्या? मुझे लगता है यहाँ से आप लोगों से मैं कुछ सीख जाऊंगा कि टॉप गन कैसे बनते हैं एंड रोमांटिक कैसे बनते हैं। नहीं, रोमांटिक तो मैं हूँ फिर भी, ठीक है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। इनकी फैमिली कनेक्टेड है हमारे साथ। नहीं ड्रॉप हो रहा है, सो व्हाट शुड वी डू? शुड वी? ओके ओके, थैंक यू सो मच आशीष, हमारे टॉप गन। इनकी ताली होनी चाहिए दोस्तों। एंड ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी जी, थोड़ा सिग्नेचर कर लीजिए आप अच्छे से। थैंक यू सो मच। और अब फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। हमारे आखिरी जो बचे हैं उनका नाम है बी मलिक अर्जुन। हेडक्वार्टर्स है महबूब नगर। एक्सपीरियंस विद एलम्बिक है 15 साल का। एस्पिरेशन है to become a successful medical representative and consistent performer year after year. The reasons for success is selection of right doctors and lunching with good plan, follow up and relationship, doctors and maintain stocks at stockist and chemist. And the last reason for success is 100% efforts for conversion input distributors to right doctors. इनका भी PCPM objective है 50,000 का. Hobbies है watching movies, playing cricket. Key milestone to build his own house, and of course, happiest moment in personal life when he became a father, and in professional, first time achieved AAA in Alembic Singapore in 2009 to 10. ताली होनी चाहिए इनके लिए, Mr. B Malik Arjun. And biggest inspiration is Veera Prasad and Shivalila parents. Now रुकिए, बी मलिक अर्जुन आइए, please stand here. Sir, you are working with Alembic since 15 years. Yeah. This is your 16th year. Yeah. Almost 2007, July 27, 2007. The most senior person as of now, the most senior Top Gun in the country right now. So I think you know everything about the company, right? From the start to the beginning, and this brand, Wildampic, which was launched last year. Yes. So you know these guys so well, right? Your leaders, and you know exactly what to do. So I've seen here that in personal life, your happiest moment was when you became a father.
Yes. And I'm sure all of you, the leaders, they are fathers. So you share that bond. But when you are working in a company, how do you manage that? Can you please share your message? Because of the support from the family, like my spouse and my parents, they are given a comfort zone to me, 100% effort the market. That's why the success is came. That's why today I am here, because of my parents' hard work, and also my sisters and brother, and also my spouse and my childs also. They are understand very well. Whenever I went late, very station where I came from almost 9:30 in the night, they will understand the work very hard. That is a success is me. Okay, that was a great answer, because he has been in the industry for the past 15 years. Of course, he knows everything about the company as of now. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you very And much. please, Thank our you very celebrity. much for my leaders. Yes, thank you so much. Our celebrity, please give your signature. तो अब जैसे कि आप सबको पता चल ही गया होगा, अच्छा, are we done with all Top Guns? सबका, are we done with all Top Guns? Okay, but there's a confusion. बाइक किसको मिली? बाइक किसी को मिला? किसी को नहीं मिला? सर आपको मिला? सर आपसे ही मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, चाबी मैं लेके गया था ना सर, मुझे दे दीजिए। अच्छा, सो किसी को नहीं मिला है राइट अभी तक? सो ओके, आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन, बट जितने लोग वहां देख रहे हैं कुछ कंफ्यूजन नहीं। दैट वाज अ प्लान। वी न्यू कि इनमें से सब कोई फिगर आउट कर लेंगे कि किसको मिलने वाला है। सो वी मेड श्योर दैट दे डोंट नो, एंड हमारी टीम वी मेड श्योर दैट दीस गाइस गेट सरप्राइज टू। सो आपको क्या लगता है, टॉप 15 टॉप गन्स किसको मिलती है वो बाइक? क्या लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है? दैट मोमेंट हैज कम। आप में से किसको बाइक मिलने वाली है? टॉप गन्स, इनकी चेहरे दिखा दीजिए। यही लोग हैं जिनमें से किसी एक को मिलने वाली है वो बाइक की चाबी। व्हाट डू यू थिंक? डू यू वांट टू विन दैट बाइक? नहीं नहीं, बाइक है पहले से। अच्छा, बाइक चाहिए आप सबको? किसको लगता है, क्या लगता है आपको? आपको मिलेगा? आपको मिलेगा? नहीं, अच्छा है, इनके अंदर पहले से बात हो चुकी है सर। बट विल नॉट वेस्ट मच टाइम। लेट मी कॉल अपॉन ऑन स्टेज दैट गाय हु इज द स्टार ऑफ द डिवीजन। यस, अभी तक सब लोग स्टार ऑफ द रीजन थे, वो मौका आ चुका है लेडीज एंड जेंटलमैन टू अनाउंस अ टॉप गन स्टार ऑफ द डिवीजन, वन एंड ओनली रोट मोटा मिर्च खा के ऐसे नाचो, आजा छोरे, आजा गोरे, आजा छोरे, नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 कच्ची बेबी जैसा कंधा नाचो, नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। Shubham Singh, a star performer, a star token. A star of the division, Mr. Shubham Singh from Azamgarh, ladies and gentlemen. He is the supreme, the top of the top, Top Gun. शुभम शुभम शुभम, आपको क्या लगा? क्या हम आपको भूल जाएंगे? अच्छा, आप सच बताइए, जब आपको फर्स्ट बुलाया था आपको क्या लगा कि हो गया, चांस खत्म? नहीं सर, जैसे मैं रीजन से मुकेश मौर्य आता श्योर था कि दोनों मैं ही लेके जाऊंगा। अरे अरे अरे, कॉन्फिडेंस देखो टॉप गन का हमारे। हाँ, तो आप तो बहुत खुश लग रहे हैं, तो आपकी फैमिली को भी थोड़ा बता दें। जी सर, थोड़ा बताइए, आपकी थोड़ा दिखाइए, थोड़ा मम्मी पापा बाइक की चाबी मिल गई है। बाइक की चाबी जीत लिया आपके लड़के ने। ये आपके बड़े भाई है ना? जी सर। अरे वो तो खुशी खुशी में फोन लगा दिया कि अरे आ जाओ सब लोग, बाइक मिल गया।
पार्टी के लिए बुला लिए सबको। अब पार्टी होगी, ये कराएंगे तो फिर फोन आना शुरू हो गया, लोग वेट कर रहे थे ना। अब आप लोग झगड़ा नहीं करेंगे ना किसका बाइक कौन यूज करेगा। अब अपना अपना हो गया है, छोटे बड़े भाई में ऐसे होता है। सबको बस इसी का इंतजार था कि बस मिलने वाली है। वो अभी पहले और फिर आप ये चाबी, बाइक की चाबी इनकी हो ना, क्या आपकी है? नहीं की। वो तो घर जाके पता चलेगा। आपका नंबर दीजिएगा, बाद में बात करते हैं कि क्या हुआ। एनीवेज, ही इज अ स्टार परफॉर्मर लेडीज एंड जेंटलमैन। आपकी फैमिली देख लीजिए, इन सब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है इसने, बहुत खुशी की बात है। शुभम, मैं यही कहना चाहूंगा अपने लोगों से कि विल्डाम्बी के नंबर 1 ब्रांड बनाना है हमें, और जो 17 पोजीशन पे उसे टॉप 1 पे लाना है, और जितने हमारे HID MID के डॉक्टर्स है उनके कंटिन्यू फोकस रखना है और ऐड करना है, जनरेट प्रिस्क्रिप्शन करना है, और जितने इनपुट्स हमने दिए वेस्ट नहीं जाने चाहिए। रेगुलर रिमाइंडर, रेगुलर उनको याद दिलाना है कि सर आपको विल्डाम्बी कैम चाहिए मुझे। 500, 1000, 50 OD। थैंक यू सो मच शुभम। आई थिंक आपकी सिग्नेचर तो हो चुकी है। थैंक यू सो मच। एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे बाइक मिलेगा अभी, है ना? चलो। Now before we do the closing, क्योंकि हम सब इतने टाइम से साथ में हैं, एंड सर आपने कहा था कि वी स्ट्राइव ऑन बीइंग द बेस्ट एंड री इन्वेंटिंग आवरसेल्व्स, राइट? तो इसीलिए सब साथ में ये गाना ये आप सबके लिए है। तो लेट्स सिंग टुगेदर एंड एंड इट ऑन अ गुड नोट। प्लीज लेट्स डू दिस। Come on, kids. This is your time. Hello, सब आ जाओ। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, 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 I'm the best. Yes, you are the best. दोस्तों मुझे तुम देख लो, मैं नंबर 1 हूँ। कोई काम हो तेज हूँ, बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं फिर भी नेक हूँ, ये तुमने कहा। अरे भाई वाह, 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 अरे भाई वाह। किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, कोई ये बन गया, कोई वो बन गया। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों। I'm the best, 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 I'm the best. Yes, you are the best. मुझ में है अजब जादूगरी कि मुझसा चार्मिंग कोई है कहाँ। क्या करूं है दीवानी मेरी, कहे मुझ
कोई वैसा यहाँ मगर कोई नहीं मेरे जैसा यहाँ मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ है सच तो ये तो Is it on? Amit sir and Manivaran sir, it's time. It's that time जो कि हम सबको बिल्कुल नहीं पसंद है, but we have to move ahead because we have to become successful. So this is the time. I request you to please give your closing remarks so that we move ahead and this event is a success. Thank you so much. So team, once again, can we give a big round of applause to each and every one of us? I think it's a end, or we have come to the end of the day, but remember friends, we have come to the end of a great beginning as the end of a great beginning. The beginning is that, you know, we are marching as a team towards the single-minded milestone and objective, which is the 1 crore mark for the division. And therefore, friends, each and every one of us contributing 25,000 PCPM, it's definitely going to take us, you know, to that milestone. And time to thank you each and every one of you. You are really a star in true sense because you shown us the sky. You shown us that the sky is the limit. Once again, thank you to each and every one of you. And also I take this opportunity to thank all the other people who have really contributed for the success of Wildambic by making 25,000 PCPM. And Amitji, are we missing anybody else to thank? Mani, normally you don't forget. You actually remind me normally. Yeah, thank you. But yeah, so I think we are missing thanking all the families of the winners who are present here. I think we had people who are either the son, the husband, the brother, or any close relative who would have seen their hair. I think they have sacrificed their quality time, their quantity of time to make you a winner. So I bow and thank each of your family members for the sacrifices they have made in ensuring that you come here as a winner. And on the behalf of entire India and all the winners, I take this opportunity to specially thank our cluster head, Amit sir, our AVP, Sanjay sir, our marketing head, Charlie sir, for giving a go-ahead for this program and especially supporting you. And I think it would not be fair if I don't call a support group. Ms. Shruti, please come here for a moment. Ms. Rupa, please come here for a moment. Mr. Sagar, please come here for a moment. Mr. Zishan, please come here for a moment. Please, without all of you, Mr. Abhijit, please come here for a moment. Without all of you, this program would have been successful. Mr. Abhijit, please come here. Please. So let's give a big round of applause to the entire marketing team. This is the team which has actually made this program so successful. Zishan, where are you, please? Yeah. Okay. Charlie ji, please. So what you all could see for the last 3 hours is the hard effort of the entire marketing team within 7 days of time. You have to believe this. Give a big round of applause to the entire marketing team. Thank you everybody. Thank you everybody on the stage. Thank you so much for all the support. And I'm sure everybody who's watching has also appreciated the kind of effort this team has put together. Thank you so much. Sure. Just wait a minute. And not to forget Mr. Kashyap, who has run this program very nicely. Please come with us here on the stage. And thank you very much. It has been a super flow of the program. Thank you very much.
Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you to the entire team for making this event a success. Of course, let me remind you guys, the Top Guns, that this event that we did today is a celebration of the successful launch of the brand. So we have to remind ourselves before we move forward that 1 crore monthly sales, 10,000 GP prescribers, and to make Wiltambik the #1 brand at GPs. Top Guns, guys, for your time. Ab bhook lag rahi hai. Let's go. Dinner is ready. Let's go attack. We'll just Thank take you a so moment- much, guys. We'll just take a moment to close. Sure, sure, sure. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, everybody, for coming on the stage. So I'm sure so many of people's, our team members and the family members who have been watching this program, they would have been proud of the winners. But yes, the few who have missed, I think their family members would be itching and pushing them to come forward and be on the stage in the next year. So Mani, what do you really feel? Where do you see now our goalpost should be? Where do you feel that we should aspire to, so that we have more and more team members and we regain the glory, pharma glory of 110% and become the market leaders? So where do you feel, what Amitji, we it should has aspire for? been very clearly defined. I think objectives are clear. Our visions are very clear. It's 1 crore is the milestone, next milestone. And for that, we need a contribution coming from each of the team member, not less than 25,000 PCPM. And our focus should be completely on MBBS, GP, and non-MBBS doctors. And the path is very clear. We need to, progress rapidly in the path already set. Thank you, Mani. Thank you for the message for the entire team to go ahead. And I'm sure the team will take this message very, very strongly to take it forward. Thank you so much. Thank you, everybody. And thank you for All the your best, active team. participation. And thank you to all India who has been watching us throughout this program. Yeah, Mani, you was sorry. All the best and good night to all. Yeah, thank you, everybody. Thank you. With that, जितने भी लोग हमारे साथ आज Zoom में join किए थे, thank you so much. I wish you guys had a great time. We had a fun event for you guys. जाइए dinner कर लीजिए, हम भी जाते हैं. All of you guys, let's go to dinner and have fun and relax and then sleep. Thank you so much, guys, for having me. I'm your host Amit Kashyap, signing off. Take care. Bye.